Good afternoon, everyone. Good afternoon, madam. Good afternoon, sir. Actually, today I am the host. Praveen sir is not able to take host the session, so I'm going to take on his behalf, carry on this session further. And I think all the participants have joined. Shall we start it? No, still we need to wait for it. We Right? can proceed. Okay. Let's wait for another 2 minutes. Okay, Oh, madam. it's around, okay, madam. Friday. 16:00 is there. I think 16:00, 2 to 3 minutes more, not an issue. Okay. So we will wait for next 2 minutes and then we'll start with the session. All of you, if you are requested to switch on your video so that it could be an interactive session with all of you. And I think now, shall we start the session? Shall we proceed with this webinar? Oh, okay, madam. It's 16. I think 05 we can start it. 2 more minutes because there are say 18 people. Generally, I think around 20-25 will be there, you know. Okay, fine. Okay. To 1605 you can dot start. Okay, fine. So it's 05 exactly in my Oh. laptop. It is showing 05. Okay. Now in my laptop it is 1604, but I don't know. But anyway, Okay, I will go by your clock. if you wish, you can start, madam. Not an issue. It's okay. Let's wait for another 1 minute according to my Right. your clock. Hello. Yeah.
Am I audible? Yes, ma'am. Yes, now you will. Okay, Yes, okay. madam. Thank you, thank you. Yes. Today's topic is recent amendments in regulations which are just introduced by IBBI. And our panelists today are the eminent panelist CA and IP Manoj Anandji, CS and IP Anuradha Visani ji, Advocate Arvina Sharma, and myself CS and IP Preeti Garg. Today we are having one of the organizer also with us. He is Advocate CA Nipun Singhvi ji. First of all, I would like to share the brief profile of all the eminent personalities which are here together with us as a panelist. And we are really blessed to have the eminent personalities which are having number of qualifications and a huge list of experience, which is difficult to share all together in one page. It was running beyond the number of pages, and we know they first is CA IP Manoj Anandji. He is director in Decode Insolvency IP Mumbai, and he is insolvency professionals for 6 years, an eminent chartered accountant having a vast experience of 35 years. He has dealt 38 assignments either as an IRP or RP or liquidator or personal guarantor or process advisor. And the latest among them were MR Lands Limited with 12,000 crore company, Teo Rolls Limited, a Tata company, and Best Textile Limited, PG to CD of Mastana Foods, AR of Ansel Crown Infrabuild Private Limited. In practice, he has been doing audit and IT cases up to IT-80 level, mainly for national level corporate. If we go by his social standing, he has co-authored book on valuation and enterprise management of CD by RP on behalf of Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI and running IBC-IP Creative YouTube. He is a visiting faculty at various seminars which are held by our esteemed institutes ICAI, ICSI, CBI, and he is regularly writing articles on IBC and income tax. Recently, he has delivered a lecture at Singapore in International Convention on IBC. He is the founder president of AIIPA, special invitee to the committee of IBC of ICAI, co-convener of BVSS IBC group, and vice chairman of committee on IBC of GIAPA, and many more. Thank you, sir, you are for being here. And I am feeling really privileged to introduce you, though this is a very brief introduction as compared to your experience. Thank you. Yeah. Our next speaker would be CS-IP Anuradha Visani ji. She is a commerce postgraduate, CS, LLB, insolvency professional, registered independent director, and MSc in psychology, which is a rare combination. She is having more than 2 decades of experience as a company secretary in practice. She has represented several cases in NCLT Hyderabad and Amravati branches representing operational creditors. Currently, she is the liquidator of Lanco Infratech Limited. Apart from all these, she has many more achievements, but we have cut down her profile because whenever she will speak, we are able to understand her knowledge and experience. Our third panelist is Advocate Arvina ji. She is a managing associate in Chandiok and Mahajan, specialized in the fields of restructuring and insolvency, as well as commercial dispute resolution. Throughout her career, she has provided comprehensive legal support, encompassing advisory and litigation services to basically the resolution professionals. So we can look her whenever we need any help. Successful resolution applicants, creditors, auction purchasers, and other stakeholders. She has been an active participant in the Insol International's Insol's Future Leaders Program and is also engaged with Insol India and IWIRC. Prior to her role at Chandiok and Mahajan, she gained valuable experience in general litigation and dispute resolution while working with senior advocate Mr. Amarjit Singh Chandiok and ASA Legal. This is my brief profile, a very brief one as compared to all other one. I am a law graduate from Delhi University in year 2006. I completed my CS in year 2001. I am a registered valuer and of SFA class, and I am an insolvency professional. ये blink क्यों करता है? Someone please, if your mic is on, please mute yourself. I am a postgraduate from Delhi School of Economics.
Right now, I'm an advocate on the role of Bar Council of Delhi, practicing CS from 2004 to 2006. I'm a visiting faculty of ICSI and IRC since 2008, ICSI RVO since its inception, ICSI IPA, ICMAI RVO. I have contributed to the books of ICSI RVO and ICSI on regular basis. I'm a guest faculty in Arun Jaitley National Institute of Management for MBA, as well as a visiting faculty of our Indian Institute of Insolvency Professional. This is not a short profile. This was running in pages, and it was difficult to sum up. Nipun sir, really an impressive profile you have, and difficult to sum up. And we are really privileged to have you with us. I think he is here. Nipun sir, you are here. I think he has not joined, so we will go with his profile when he will be there, because this is his achievements are really beyond words. A brief introduction I would give is, he is a practicing advocate, needs no word of introduction, FCA, CS, LLB, LLM corporate laws, certified forensic, IFRS, bank auditor, qualified independent director, Executive Program on Merger and Acquisition, IIM Ahmedabad, and Qualified Insolvency Examination, IBBI. He has been a member of World Bank Insolvency Program on Train the Trainers jointly with IBBI and IPA of all the three institutes, ICAI, ICSI, and ICMAI. He has submitted a research paper which was selected by IIM Ahmedabad, and IBBI published it on Anusandhan, on sale of company under liquidation as going concern. He has been appointed by NCLT for convening meetings as chairman in disputed cases of operation and mismanagement. Rest, sir, whenever you will join, please introduce, because please share your experience with all of us, so that we can always look forward to you for his experience as far as our profession is concerned. Thank you. So this was an introduction of all of you, and I would like to welcome all the panelists here in this webinar. And to start with, I would like to hand over the opportunity to CAIP Manoj Kumar Anandji first, who is going to deliberate on the topic of the recent amendments in the IBC. Sir, please, over to you. You are muted, sir. Sir, you have to unmute yourself. Manoj sir. I was muted. I speak again. Thank you very much, Piti. You gave very illustrious introduction of all the panelists. We are Thank really you. obliged with that thing. I welcome my co-panelist Anuradha Binani ji also, Advocate Arvina Sharma ji also, and you also. Thank Nipun ji you. will be joining us. He needs no introduction. He has Right. been, teacher to most of the IPs. Whenever, in fact, I also get stuck up, I always have his opinion, and his opinion has been the most valuable. I hope Mr. Jeev Bansal have also joined, or Mr. Jeev Khurana ji, ex-DGM, Central Bank of India, and Mr. Piyush Jain will be there. चलिए before we move forward, the structure of our program is that मैं इस टॉपिक को ले रहा हूँ जो आईबीसी के भी रिसेंट अमेंडमेंट्स के ऊपर नोटिफिकेशन आया था 31 जनवरी को, उसके बाद 1 तारीख को जो सर्कुलर आया था उनको भी मैं ले रहा हूँ। तो मेरे साथ जो मेरे को होस्ट हैं वो बीच बीच में दे बी आल्सो जॉइनिंग मी और अपडेटिंग मी वेर एवर आई बी मिसिंग एनीथिंग देयर इन, और मे बी अदरवाइज आल्सो दैट विल बी देयर। तो प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन प्लीज। हाँ जी, मेरे को जरा स्क्रीन शेयर अलाउ कर दीजिए। Most of you have to make me co-host, then yeah, screen will be I'll be able to share it. चलिए, in the meantime, जब तक आप अलाउ करते हैं, I just yeah, no, I've been allowed. Thank you very much. Thanks a lot.
Yes. Yeah, I'll be taking up the topic recent amendments in IBBI regulation, जो कि 31/1/2024 का नोटिफिकेशन आया था, उसके बारे में. We are running an organization IPA, and my office do a lot of hard work in preparation of this all these slides. This is a small introduction which I'm skipping very fast. Okay. As an introduction, ये जो हमारी जो regulations आई हैं, इनके पीछे की story क्या है और till date IBC ने कितना travel करा है. I just have a very small slide for that. I'm just reading it for everybody. IBC 2016 was a landmark legislation passed by Parliament in recent times. Due to this, India's ranking in the World Bank Ease of Doing Business Index improved by 14 places to 63 in 2019. In resolving insolvency, India's ranking jumped 56 places to 50 in 2019 from 108 last year, the highest ever jump of any country in the history of the World Bank. The government also put a lot of effort to make IBC 2016 as the most successful legislation of recent times, definitely parallelly with the GST also. Although GST is taking, if we consider revenue and other thing, GST is exceeding IBC. It is quite natural also because GST is applicable to everybody and IBC at present is applicable to the corporate words only, or at the most personal data to corporate data. Okay. The regulator and has been recommended so for that it has been regularly issuing discussion papers on the public domain, and based on feedback it is bringing changes in the various regulations as per the powers granted to them under section 240 read with section 196 IT of IBC 2016. Basically we people all know, but still I just update everybody that जितनी भी ये अमेंडमेंट्स रेगुलेशंस के अंदर आती हैं, रेगुलेशंस की अमेंडमेंट करने की पावर आईबीबीआई के पास है, रूल की अमेंडमेंट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को डेलीगेट कर रखी है. तो रूल्स में जब भी अमेंडमेंट आएगी तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से आती है, और कोड के अंदर जब भी कोई अमेंडमेंट आती है तो दैट इज थ्रू पार्लियामेंट ओनली. It is a it is an unsaid law, in fact, not principle, I should say. IBBI is doing very hard work. Whenever they feel that some changes are required in the regulation, they put it in the public domain for discussion paper, and in that discussion paper we people give our comments. And जैसे कि मैं अब जब हम इन पॉइंट्स को हम थॉरली स्टडी करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि जब जो डिस्कशन पेपर था उसके अंदर उन्होंने क्या कहा था, और उसके बाद जब कमेंट्स हम लोगों के आए तो उन्होंने जो फाइनल अमेंडमेंट करी, जब फाइनल रेगुलेशन के अंदर जो चेंजेस करे, दोज वर इन कंसोनेंस विद what people said, or what mainly practicing IBC law said in that way. Okay, in that process, it has brought amendments in the following 5 regulations as on 31st January 2024, followed by 2 circulars as on 1st February 2024. So, yeah, this is the preamble I would like to say. अब कौन से 5 amendments regulations का, because there are I think around 25-30 regulations, उनमें से किन 5 regulations के अंदर amendments आई हैं, ये हम let me read it briefly for everybody. IBBI Insolvency Professional Amendment Regulation 2024. When we be talking in detail about that, we shall be referring it as IP regulation. दूसरा रेगुलेशन जो उन्होंने अमेंड करा है जी, वो है मॉडल बाय लॉज एंड गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024. ब्रीफली वी बी रेफरिंग इट एज एजेंसी रेगुलेशन. बेसिकली ये एजेंसीज हमारी आज की डेट में यहाँ पे 3 एजेंसीज हैं, तीनों की तीनों जो हमारी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्टर्स. इन तीनों ने जैसे ही हमारा आईबीसी स्टार्ट हुआ था तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टोल्ड देम कि जस्ट टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ आईबीसी you open up agencies for that, and these agencies are also doing tremendous work. And जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की एजेंसी है उनके पास मैक्सिमम मेंबर्स हैं, एंड दे हैव बीन आल्सो ऑन डेली बेसिस अपडेटिंग वी पीपल. एंड उनकी अंदर जो एक अमेंडमेंट आई है तो वो हम वी शैल शेयर इट. तीसरा जो है ये है इंसॉल्वेंसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं
PG2CD regulations. ये गुरमीत सोदी की जजोदिया जी की, पहले गुरमीत सोदी नाम था, बाद में जजोदिया की जजमेंट था। ये सुप्रीम कोर्ट की जो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने पहले जजमेंट आई है, उसके बाद PG2CD के अंदर काफी सारी हलचल मच गई है। नाउ NCLT बेंचेस आर टेकिंग अप केसेस क्वाइट viciously. और एज फार एज वी IP ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कंसर्न, NBFCs कह लो या बैंक्स कह लो, especially State Bank of India, PNB, they have become very active to allocate cases to to the IPs also. तो PG2CD regulations के अंदर भी हमारे को we need to learn a lot. और इसके अंदर भी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट गुरमीत सोदी की जजमेंट के बाद, जजोदिया जी की जजमेंट बाद, इट हैज बीन क्वाइट इन द न्यूज आल्सो. उसके बाद एक बैंकरप्सी रेगुलेशन है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं. बैंकरप्सी रेगुलेशन के अंदर अमेंडमेंट्स, बेसिकली इसको हमने इस करके लिया कि इट इज कंपैरेटिवली द सेम जो PG2CD रेगुलेशंस हैं. और सिमिलरली जो है बैंकरप्सी के केसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बिकॉज बैंकरप्सी केसेस को अगर हम सन या डॉटर ट्रीट करें तो ये PG2CD इज देयर फादर एंड मदर. तो अभी जब PG एंड CD के केसेस जब क्या कहते हैं कंक्लूड होंगे, तो फिर सेक्शन 121 के अंदर या अदर सेक्शंस के अंदर इनकी बैंकरप्सी की एप्लीकेशंस फाइल होनी शुरू होंगी. अभी हुई है, बट दैट इज वेरी वेरी स्कैटर्ड. बट इन द डेज टू कम डेफिनेटली, बिकॉज ये जो हमारा PG2CD का है, तो इसके अंदर अल्टीमेटली जैसे हमारे यहाँ पे रेजोल्यूशन CRP के अंदर होता है, तो ये एक PG2CD, तो इनको एक पहले मौका दिया जाता है, चांस इज गिवन टू द guarantor, instead of starting immediately the insolvency process against them, let them be given a chance to come out with some repayment plan or something like that, so that their skin is saved from the bankruptcy. बट रीपेमेंट्स प्लान की बारे में भी डाटा कोई ज़्यादा आया नहीं है. बट एज फार एज द केसेस विच वी आर हैंडलिंग और विच वी हियर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड अदर्स, कोई रीपेमेंट प्लान्स इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं रहे हैं. अगर आ भी रहे हैं, पहले तो आ नहीं रहे हैं, अगर आ भी रहे हैं तो उनके अंदर हेयर कट इज कमिंग आउट टू बी वेरी ह्यूज. एंड पहले ललित कुमार जैन वाली जो जजमेंट थी, उसके बाद ये जजमेंट के बाद बेसिक लीगल कंसेप्ट तो सारे के सारे क्लियर हो गए हैं, बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन. इवन चलिए, दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ टुडे. और एक पांचवा जो है, दैट इज द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस अमेंडमेंट्स. इसके अंदर कुछ चीजें जो हम लोग पहले प्लानिंग कर रहे थे, इफ यू गो टू माय यूट्यूब चैनल विच आई शैल शेयर विद यू, तो आप देखोगे कि जो वॉलंटरी लिक्विडेशन पे जो मैंने लेक्चर दिए थे, ऑल्दो वेदर वी कॉल इट एज अ प्लानिंग और मिस प्लानिंग और मे बी सम अदर थिंग आल्सो देयर, तो उसके अंदर जो कुछ लूप होल थे वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस को, जो लोग कुछ अब्यूज कर रहे थे, जिसको एक जो लॉ की एक सेंटिटी थी उसके अकॉर्डिंगली वॉलंटरी लिक्विडेशन केसेस नहीं कर रहे थे, उस पर्टिकुलर चीज को इन्होंने प्लग करने की कोशिश करी है थ्रू दिस अमेंडमेंट, एंड थोड़ा सा और रेशनलाइज भी करा है इसको. तो along with that, two very important circulars has come out to be है. सर्कुलर नंबर हम इसको ब्रीफली सर्कुलर 64 कहेंगे, और दूसरा है सर्कुलर 65. कहने को ये बड़े छोटे सर्कुलर हैं, लेकिन इनके अंदर जो है ना बहुत बहुत जबरदस्त बेनिफिट दिए गए हैं, विच VIP पीपल आर डिमांडिंग सिंस वेरी वेरी लॉन्ग. और चलिए, IBBI, वी ऑलवेज से कि हमारी IBBI बड़ी स्ट्रिक्ट है, बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन. आवर रेगुलेटर इज हेल्पिंग अस अ लॉट आल्सो. जब 34B के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट ला के हमारी फीस स्ट्रक्चर को करा गया, तो इट वाज अ क्वाइट वेरी बिग डिवर्स डिमांड फ्रॉम आवर साइड, स्पेशली फ्रॉम द पीपल हु आर स्मॉल IP प्रोफेशनल, कि वो किसी भी कोटेशन के अंदर, किसी भी चीज के अंदर उनको काम नहीं मिल पाता. एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट जो फीस कट था उसके अंदर कोटेशंस आर गोइंग वेरी वेरी लो, तो उन्होंने उस चीज को यानी कि जस्ट कीपिंग टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस IBC को ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए उन्होंने उसको चीज को खत्म करा. तो ये बिफोर आई स्टार्ट फर्दर, आई रिक्वेस्ट अनुराधा जी और माय को पैनलिस्ट अरवीना जी और प्रीति जी, इफ दे वांट टू ऐड समथिंग with that, then we move further. No, sir, I think we can take up one after the other. So in between, if we have any questions, we'll post you. And we request the audience to posting your questions in case you have already any questions, or in the meanwhile, when we are discussing these regulations also, probably you can post your questions so that we can take it up as and when required. That's Sir, great. चलिए, हाँ, बस ठीक है. comment
स्टार्ट कर लीजिए। मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो जब भी कोई क्वेश्चन किसी का होगा तो प्लीज आई वुड लव टू हियर फ्रॉम दैट क्वेश्चन। और इनफैक्ट ये हमारा जो सेशन है तो वी पीपल आर ऑल इक्वल, देयर इज नथिंग लाइक दैट कि मैं स्पीकर हूँ वो पैनलिस्ट है, नथिंग लाइक दैट। वी पीपल, किसी टाइम पे मैं आपके लिए ऑडियंस होगा, किसी टाइम पे आप हमारे लिए स्पीकर होंगे। तो इंटरेक्शन इज द थ्रू इंटरेक्शन ओनली वी कैन लर्न। और होता ही है कि ये रेगुलेशन तो आप सब लोगों ने देख भी लिए होंगे, बिकॉज आज की डेट पे तो वी पीपल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और एडवोकेट, हम खाना खाएं या ना खाएं, पानी पिए ना पिए, लेकिन जो आईबीबीआई की तरफ से चाहे कोई सर्कुलर आता है या कोई नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी आता है, वी नीड टू कीप आवर सेल्फ अपडेटेड, बिकॉज वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग और इतना ज़्यादा प्रोलिफिक होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशंस होती हैं उसको मेनी अ टाइम्स काफ़ी हाई यानी कि लेवल तक टिल्ट कर देता है। एंड स्पेशली जो हमारे केस लॉज भी आते हैं, तो दैट इज देयर। चलिए, आई नाउ आई टेक अप as my the co-panelist suggested. This is small. Above regulations have further eased the implementation of IBC 2016 by allowing IPs to resign, increasing IPE's role, streamlining AFA tenure, making voluntary liquidation process more transparent, and allowing IRP, RP liquidator to act as RP for PG and bankruptcy cases. Similarly, circulars have also clarified various IP and IPE's issues in their favor. These are discussed in detail as follows. चलिए, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अमेंडमेंट रेगुलेशन. Briefly we call it as IP regulation. I try to prepare my presentation with the logic. इसके अंदर एक न्यू क्लास 22A फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ऐड करी गई है. What are the logic behind that? I try to, whatever changes has come out to be there, to the best of my knowledge and belief, मैंने उसको इस तरह से प्रेजेंट करा कि so that I should be able to give you the logic also, what prompted the IBBI to go for all these changes, and consequently these changes have been brought. Please keep it in mind that all these changes were thoroughly discussed in the discussion paper earlier, and from the outcome of from the feedback of that discussion paper from the public, they have come out with the amendment. चलिए, अब न्यू क्लास 22A ऑफ फर्स्ट शेड्यूल इन आईपी रेगुलेशन में जो ऐड करी गई है, व्हाट इज दैट? Earlier insolvency professionals appointed at IRP, RP, AR, liquidator, bankruptcy were having no part to resign. They have to continue sometimes for years without any remuneration to run the corporate debtor with all the responsibilities. इसके अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल which I have seen among my friends is there. Somehow I have been lucky enough to not fell in that particular web. That one of my friend, he says कि he get appointed as a liquidator in the year 2017. Or because of some litigation, he is not able to file litigation of some property therein, and that property is very material. He is not able to file the dissolution application, जबकि पहले liquidation का period 2 साल का होता था और 1 साल का होता है. So he is not able to file anything, and we people know that in most of the liquidation cases, the remuneration is based on sale of the particular asset as per regulation 4, and distribution of that particular amount received therein. तो ना कुछ सेल हो रहा है ना कुछ वो हो रहा है. ही इज सिंपली कैरिंग दिस थिंग देयर फॉर years नाउ. जो कुछ इनिशियली एसेट्स वगैरह सेल होने थे वो हो गए, और उसके बाद जो उनको रेमुनेशन मिलना था पहले 1 साल 1.5 साल के अंदर मिल गया. उसके बाद जो एक प्रॉपर्टी कोर्ट्स के अंदर डिसाइड हो नहीं पा रही, और दैट इज टेकिंग टाइम. जब वो टाइम ले रहा है तो ले रहा है, बट ही हैज टू कंप्लाई ऑल द थिंग्स. He has to regulate all the litigation. He has to regularly update NCLT also. He has to hire advocates for who will take care of all this thing. Above that, he has to file reports with the IBBI also. He has to file monthly report with the agency also. He has to file the half yearly report with regulator also. तो कहने का मतलब यह है कि वो बेचारा इतना परेशान हो गया है, और उसके साथ चांस की बात यह है कि ही इज अ वेरी वेरी रेनाउंड एंड सीनियर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कि इस तरह के 3-4 असाइनमेंट स्टक अप हो गए.
So he says, I don't have any right to resign. There's nothing given in there. And once he filed with NCLT application also, he want to give away that particular liquidation assignment and let you appoint somebody from the panel also. So NCLT also did not adhere. They said there is no reason whereby we can help you in that way. तो इस तरह के लोगों के लिए this thing has come out to be a blessing in disguise. How it has come out to be blessing in disguise that new clause 22A to first schedule of IP regulation has been added therein, which says that COC, SCC, Stakeholders Consultative Committee, COC, we know everybody, debtor and creditor. Debtor and creditor is the concept borrowed from section 95-94. 95 creditor, 94 debtor, were enjoying it as all the, yes. COC was not allowing him to also resign. Reason for that was there कि they have a great trust. They say जो भी इसके अंदर underlying assets are for which litigation is going on, you are in a better position to handle it and take care of that asset instead of we people there. जबकि अगर हम देखें तो it is the baby of COC, SCC in the case of liquidation. They should have taken care. But when they were getting benefit without any cost, they never thought, they were not allowing to that particular liquidator to resign also. Due to this, there was a great resentment among IPs, and now IBB has allowed them to resign on the recommendation of COC, SCC, debtors, creditors, subject to approval by adjudicating authority by inserting a new clause 22A of first schedule of IP regulation. Meaning thereby no resignation is possible, but again a big world is there जिसको कि मैं ये कहूँगा which I've highlighted also on the recommendation of COC, SC, debtors and creditor. चलिए yeah, we thought of when I was writing this particular slides, I thought of incidentally it will also benefit whereas IRPE, RPER, liquidator, bankruptcy are not having good terms with COC, SEC, debtors and creditors. It happens. You can have a sweet and sour relations. Most of the marriages do prevail, but sometimes divorces are also there. Law should give provision for that also. Here it is pertinent to note that IRP, RP, ER, liquidator, bankruptcy now can ask adjudicating authority wherever COC, SEC, debtors, creditors does not give approval of their resignation, provided there are genuine reasons to resign. These two E and B points are not part of the regulation. This is what I thought of sharing with you as a practicing IP. तो इस मेरे इन दो पॉइंट्स के ऊपर I would request that जो मेरे advocates panelists हैं, especially अरवीना शर्मा जी और जब प्रीति गर्ग जी, तो ये let's deliberate on it कि ये will this benefit our IP community or it will simply simply be the white elephant this prison therein. Please deliberate I on it. was about to say the same thing that नाक कान इधर से नहीं पकड़ा तो उधर से पकड़ लिया. It's just like that. You are holding here from the ear from the other side of it. And it's if the recommendation is required, so there was a provision that COC can remove the resolution professionals also. The provision was already there in it. If it is on their recommendation and then they are going to adjudicating authority, then I think there is a little bit more required in this particular regulation. Okay. Sir, earlier also we had to give reasons that we want to resign, but however, only if COC was convinced, they could have removed us. Now also it remains the same that unless they recommend. So is there a provision that we can directly go to adjudicating authority and say that we do not want to continue? Because it says recommendation of COC, SCC, debtor, creditor, everybody is required. And then approval. So two things are here. It is at two legs. First leg is it has to be recommended by the respective committees. Secondly, it has to be approved by the adjudicating authority. So do you think what reasons can be there? The adjudicating authority, suppose first leg cross भी हो जाते हैं. SEC ने recommendation कर भी दिया. So what authority do adjudicating authority have कि no, I will not entertain this application?
देखिए वो अब जो आपने सेकंड वाली बात करी, इन माय हम्बल सबमिशन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ पे एक प्रेसिडेंट की पोस्ट कही जाती है, स्टेम वाली पोस्ट है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को पावर तो दी जाती है, तो वो इस तरह के जो ये बेनिफिशियली प्रिजन्स होते हैं उसके अंदर दे रियली इंटरफेयर एंड दे डू व्हाट कमिटी डिसाइड्स। अब इसके अंदर आपकी पहली वाली बात जो है, दैट आई दैट नीड टू बी डेलिब्रेटेड मोर, कि रिकमेंडेशन जो है, व्हाई एनी कमिटी विल रिकमेंड और गिव अप्रूवल फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ the resignation of the statutory appointed person when when things are not going in the way it should have gone. Can I add in this? So Yes, please, Arvina ji, please, I please. I think the recommendation part is only added basically to safeguard the other interest. For example, I understand whether on right grounds we are resigning. The RPs are resigning on the right grounds, it's fine. The recommendation should only mention that we are fine with the reasoning given. But if there are certain overt acts which have happened, and on those grounds the resignation is coming, then that those checks and balance also has to be maintained. So I think the understanding has been like that it has to be recommended only. We should not take it as a decision, a finalizing decision. If they don't recommend, the discretion will still lie with the adjudicating authority. I understand the point कि आजकल adjudicating authority कैसे करता है, majority COC ने बोला, SCC ने बोला, they will take it. But still, as a court appointed officer, there has to be certain reasons which we give, because we have to understand also that we step in as a board of director of the company. We act as a suspended board of director of the company, and जब उनका भी resignation होता है, those have to be on a particular ground. So I think that is the intent, but I am absolutely with you that it cannot be an absolute recommendation. It has to be if there is any overt act, if they're declining, and the adjudicating authority also should limit their submission to the extent ki reason kya hai resignation ka. And sir, with this provision, they have placed the liquidator and the RP, IRP, everybody at a same footing. जबकि सर liquidator is a court appointed officer, quasi judicial authority है, but condition सभी के लिए same कर दिया गया है. Whether it is a bankruptcy trustee or a AR, including AR, they have kept all of us on the same footing, and they Yes. say recommendation. Generally, what happens, sir, when I want to resign, basic first thing will be my fees. They are not paying my fees, or I apprehend that there is no fees coming in this assignment. So why will they recommend? Why will they say, अच्छा ठीक है, आपको fees नहीं आ रही, आप चले जाओ? So that I mean, what grounds can they recommend, and what grounds can they object? अनुराधा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट इन बिटवीन आई वाज थिंकिंग कि whenever there is any amendment, we advocates, brothers and sisters, get benefited by that a lot, because recommendation, adjudicating authority power, my dear friend, Advocate Sharma has very empathetically told us कि between the lines कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है. शायद we IPs are not so educated to understand this thing. Yeah, I go with your your points कि अगर अब मैं अब दोनों की बात को क्लब करूं, तो कहने का मतलब यह है कि रिकमेंडेशन इज विल बी सिंपली अ प्रोसीजरल पार्ट, और अगर किसी कारण से आईपी अपने आप को ये रेजिग्नेशन के लिए कहता है, और जिस पॉइंट पे वो कहता है, जैसे मेन इशू फीस का है, उसके ऊपर उसने कहा और हमारे जो थे वो कमेटी वाले नहीं मान पाए, देन दैट केस आई शैल नॉक टू माय फ्रेंड शर्मा जी, मैडम शर्मा, एंड से कि आप इनको एक्सीड करते हुए, कमेटी को एक्सीड करते हुए, फाइल एन एप्लीकेशन विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी and impress them that if they are not recommending, that is not as per the procedure of the IBC.
दे शुड रिकमेंड। और उसके अंदर मेरी एक बड़ी अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो मेरी एक बड़ी कंटेशियस इश्यू होगा कि भाई मैं फ्री में काम क्यों करूं, एसेट्स आपके, एसेट्स को करेक्ट। सेल करके प्लस माइनस आपका होगा। मेरे से जो आप हर महीने वो कंपाइलेशन करवा रहे हो, मेरे से जो हर एट एवरी ओकेजन एडवोकेट्स के पीछे एज ए टेल आई एम आफ्टर देम कि आप केस को अटेंड करो, आप एनसीएलटी को अटेंड करो, आप जो केस के अंदर जो उनको मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ हर हेयरिंग से पहले, तो व्हाई शुड आई डू, आई एम अ प्रोफेशनल, आई नीड टू बी पेड फॉर दैट। तो most probably things will tilt in our favor in the days to come, और NCLT will definitely, अगर कुछ इस तरह का टिकिश इशू आता है कि whereby committee is not helping us to their recommendation are not in their favor, so perhaps the adjudicating authority with the passage of time do delve into it, and some sort of our जो फीस का हमारा जो इशू है वो शायद थोड़ा सा मे बी गेट सेटल्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे हमारे और बहुत सारे प्रिजन्स इन आईबीसी जब वो स्टार्ट हुआ था तो कुछ और थे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद ऑनरेबल, स्पेशली विद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स, इट गेट सेटल्ड। एंड मे बी अगर आईबीबीआई को कुछ लगेगा तो हो सकता है वो जो हमारा रेगुलेशन 4 है उसके अंदर कुछ, अभी तो आज की डेट में तो सिर्फ सेल और परचेज पे ही ये माना जा रहा है, हो सकता है कुछ पीरियड वाइज ही हमारी फीस एक दे कम आउट विद सम रिकमेंडेशन वेयर बाय they amend the regulation and come out with period wide fees also. Let's hope for the best. In fact, when this discussion paper came out to be there, so me from my association side also, and me as an individual IP also requested to the IBBI out of the context that some fees of liquidators should also be based on time basis. Correct. I think we deliberated on it. Should we move to the next point? Sir, I have one more thing here. When they say Yes. when they say recommendation, do they mean that again it has to be approved by 51% majority, 66%, या फिर कैसा रहेगा ये? इसका कोई प्रोविजन नहीं है अभी तक। इट्स जस्ट Yeah. सिंपली, आई एज पर मी आई डोंट थिंक देयर इज अ Yeah. प्रोविजन। सो इट इज बेसिकली अगर आपको हैंड ओवर करना है तो आप रिजाइन कर रहे हो, आप बस रिकमेंडेशन ले रहे हो दैट यू हैव डन योर ड्यूटी, यू हैव गिवन बैक एवरीथिंग, and I think it should limit to that extent only until unless the COC or the SEC is trying to be smart. You will always have an option to go to court. This is what I understand. Yeah, Subject क्या कहते हैं parties. अरवीना जी, आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज दैट कि जैसे अगर हम इसका पैरेलल प्रिजन देखें तो आरपी को रिमूव करने के लिए आपको 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है, Correct. और 12A की एप्लीकेशन के लिए 90% की मेजोरिटी चाहिए होती है। तो इसके Correct. अलावा बाकी सब प्रिजन्स के लिए 51% चाहिए होता है, मेजोरिटी चाहिए होती है। आई Correct. थिंक व्हाट आई फील इज दैट फॉर दिस प्रिजन आल्सो रिकमेंडेशन के लिए भी सीएससी को पास करने के लिए 51% जो एक सिंपल मेजोरिटी जिसको हम कहते हैं, that will be fair enough. That will be, until it gets specified. But I'm more concerned, with these webinars. I must tell you, whatever we do take into webinars, तो चाहे हमारे तो IBBI regulator is well aware of what is going on in the public. तो एटलीस्ट वी कैन से दिस थिंग कि ऐसी कोई सिचुएशन ही ना आए कि वेयर बाय बिकॉज ऑफ फीस स्ट्रक्चर somebody is resigning in the case of liquidator or otherwise. Let there be some more streamlining of fees as far as liquidators are concerned, as far as RP appointed under section 94, 95, and maybe the bankruptcy people appointed later on. Sorry, bankruptcy का केस में सेल परचेज का है, तो some in the case of 94, 95 के अंदर भी बहुत ज्यादा डिमांड उठ रही है कि some bare minimum fees should be there in। जब इस तरह के इश्यूज ही नहीं रहेंगे तो बिकॉज एट दैट टाइम दे विल एससीसी और सीओसी विल आल्सो बी अवेयर ऑफ इट कि भाई अगर हम आईबीसी में जा रहे हैं तो उसकी बेयर मिनिमम कॉस्ट इतनी आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी सेक्शन 9 की एप्लीकेशन जाती है, जब से वो ये क्या कहते हैं प्रैक्टिस ये स्टार्ट हुई है कि जो ओसी के ऊपर कोर्ट कह देती है कि आप 1 लाख 2 लाख रुपया यू पे फॉर दैट, तो नाउ ओसी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन ऑलवेज कंसिडर कि मे बी दैट एक्सपेंसेस गेट रेटिफाइड लेटर ऑन कि मैं कि ये एक मेरे को एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी है। सिमिलरली इन द केस ऑफ आईबीसी केसेस आल्सो पीपल शुड फील दैट कि ये आईबीसी में जाके ये नहीं है कि हमने एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट करवा ली तो उसके बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू सीओसी और एससीसी विदाउट पेमेंट और एनीथिंग लाइक दैट, कि इसके अंदर अगर हम कोई प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर रहे हैं, अगर हम किसी आईपी को अपॉइंट कर रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ फीस विल बी देयर। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? Yes, sir. Yes. चलिए,
That's good. We got we deliberated on it for I think 10 to 15 minutes. That's a nice deliberation. Thank you, Bisani ji. Thank you, Thank you. Advocate Sharma. Thank you. Okay. Yeah, this is a welcome provision. This is a very welcome provision. ये एक नई क्लास 23B and 23C फर्स्ट शेड्यूल ऑफ आईपी रेगुलेशन के अंदर लाई गई है. ओके, यू मस्ट पीपल आर अवेयर ऑफ इट. फर्स्ट शेड्यूल ये है कि जिसके अंदर हमारी जो क्या कहते हैं आईपीएस को जो ड्यूटीज है, जो आईपीएस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको स्पेसिफाई करा गया. आई जस्ट रीड इट. Earlier, IPs who were acting as IPs were restrained from engaging or appointing its partners or directors in their assignments. And similarly, they were not allowed to be engaged or appointed by the partners or directors in their assignments being related to them. Now, new clause 23B and 23C in first schedule of IP regulation has been inserted to provide that IPs acting as IP can engage or appoint its partners or directors not only in their assignment, but also get appointed or engage themselves in their assignment also, except of audit and valuation assignment. So I welcome this particular move. It is helping. It will help a lot because our government is encouraging a lot. IBBI is encouraging a lot कि IPE should come out as an IP instead of as an individual IP. तो उस encouragement के लिए उनके लिए अगर उनका scope बढ़ा दिया गया है या उनके partners को directors का scope बढ़ा दिया गया है, तो दैट इज अ वेलकम स्टेप फ्रॉम माय साइड. और इसके अंदर अगर ऑडिट और वैल्यूएशन असाइनमेंट को एक्सक्लूड करा गया तो दैट इज क्वाइट नेचुरल बिकॉज दैट इज ऑडिटर एंड वैल्यूअर हैज टू बी एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ द आईपी. तो दैट इज देयर. प्लीज ऐड अनुराधा जी इन इट. Sir, I would like Preeti to speak on this. Sir, being a registered valuer, I will say yes, truly it is an impartial valuation that is being done, and it is separated from the beginning that the valuation and audit shall be independent of the insolvency professional assignment. Apart from that, it is really a welcome step, as you said, that the partners and the directors who are also knowledgeable enough in the same field, they are also insolvency professionals, or they are, then they can contribute in it. So it's a real welcoming, and scope of the valuation is still larger in the IBC. Preeti, I have a Secondly, question here. एक मिनट, एक बात और भी तो है ना कि अगर मेरे पास कोई काम आता है, मेरे पास कोई असाइनमेंट आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड शेयर इट इन माय फैमिली. एंड आईपी इज वेदर एज ए कंपनी और एज ए पार्टनरशिप एलएलपी इज ए और पार्टनरशिप फर्म इज माय फैमिली. So I must take care of other members of my family. Now law is providing us. We are really thankful for this amendment. Yes, Anuradha ji, please carry on. Sir, यहाँ जब Preeti, when the word audit is used here, so are we referring only to the statutory audit or transactional audit or any other No, audit? audit Forensic is audit. basically for all kinds of audit, because So any audit kind of means an audit. independent opinion. Okay, so So any it, kind of audit will not be taken up by the same IP whose partners or yes, directors are yes, appointed as IP. yes. Okay. In my opinion, audit here means transactional audit only, because statutory audit तो वैसे ही नहीं कर सकते because that is being done under Companies Act 2013. उसके अंदर तो वैसे ही आप एसोसिएट बंदे से नहीं करा सकते. इस Dependent. केस में IBC refers for transactional audit only. सेक्शन 44, 45, 47, 66 के बीच में जो ऑडिट्स होते हैं, तो that is there. Sir, तो फिर basically, forensic sir, audit. अनुराधा जी, ऑडिट और वैल्यूएशन के लिए ऑलमोस्ट डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही दी गई है. ऑडिट मींस एन ऑडिट बीइंग कंडक्टेड बाय अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. एंड जब भी ये एक वो क्लॉज लगा देते हैं, जैसे अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करना, ही शैल बी एन इंडिपेंडेंट, ही और शी शैल बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन. सिमिलर इज फॉर द ऑडिट ऑल्सो. एंड इंडिपेंडेंसी जो क्लॉज है, उसकी वजह से जो है ना, ये 2 पॉइंट्स इन्होंने एक्सक्लूड कर दिए. चलिए, नाउ लेट्स गिव ए प्रॉमिस टू ईच अदर. मेरे पास कुछ ऐसी असाइनमेंट आएंगी तो मेरी जो सीए सिस्टर्स हैं यहाँ पे, मैं उनके साथ शेयर करूंगा, और आपके साथ कोई आएंगी तो आप मेरे साथ शेयर करना. इट इज प्रैक्टिकली हैपनिंग देयर बिकॉज आई टेल यू कि वो अब ये जितने भी लिक्विडेशन वाले केसेस हैं ना, जिसके अंदर आप गोइंग कंसर्न बेचते हो कंपनी को,
तो उसके केस में बायर कई बारी वो कह देता है कि आप हमारे को स्टेचुटरी ऑडिट करवा के, ऑडिट कंपनी एक्ट करवा के दीजिए बैलेंस शीट। इन दैट केस वी ऑलवेज गो फॉर एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो लेट्स इंक्रीज मनोज ईच सर, अदर फिर वैल्यूएशन डोमेन आल्सो। असाइनमेंट के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर देती Definitely, definitely. You have a right for that. You being my sister has a first right for that. थैंक यू। Sir, एक question आया है. Can we answer it right now? Yes, yes, Relating to please. the same regulation, Inder Raj Yeah. Singh says whether the IPA can distribute to its partners even if the partners are not in IBBI list of 6 months. Whether an IPE can distribute it to our partners who are, yeah, it has nothing to do with the IBBI list. यस यस, ये जब हम लोग आईबीबीआई लिस्ट का सिर्फ एक, आई थिंक ये इज टॉकिंग अबाउट जो हमारे पास एनसीएलटी की पैनलमेंट होती है जिसके अंदर आईबीबीआई अपनी पैनल की लिस्ट देती है, दैट हैज ओनली अ लिमिटेड पर्पस, दैट पर्टिकुलर पैनलमेंट हैज अ लिमिटेड पर्पस। when NCLT has to allot some case, only then they look into that panel, otherwise that panel has no meaning. Or in fact, many a times a lot of senior IPs are not applying for this panelment also. चलिए जी, let's move forward. Yes, sir. Okay, these were the only amendments in IP regulation. और इसके अलावा मेरे यानी कि what I thought of, जब सर्कुलर्स की बात आएगी तो उसमें फिर हम उसकी बात ध्यान देंगे. Now we move to the agency regulation. चलिए, अभी आपने 6 महीने की बात करी तो वही पॉइंट यहाँ पे बाई चांस आ गया. इसके अंदर बेसिकली क्लॉज का रिमूव करा गया है. सब क्लॉज 6 इन क्लॉज 12 ए इन पैरा 6 ऑफ शेड्यूल ऑफ एजेंसी रेगुलेशन रिमूव करा गया है. आई जस्ट रीड इट, इट्स लॉजिकली आई रीड इट बिकॉज इसकी ना बहुत सारे वेबिनार्स के अंदर बड़ी इंटरप्रिटेशन दी जा रही थी. इसका ये मतलब है, वो मतलब है कि एएफए इशू करा जाएगा, वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए होगा या उसकी वैलिडिटी सिर्फ एक्सटेंडेड पीरियड के लिए होगी. बट लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक फॉर इट, so that once we understand the logic for it, then that will be quite easy to understand the reason and logic of this particular amendment. Yeah, IBBI was preparing its panel, which was forwarded to adjudicating authority for appointment of IPs by adjudicating authority, where name of IPs was not given by applicant in their petition under section 9, 94, 95, 122 and 123 or otherwise also. अदरवाइज आल्सो का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, मैं आपको बताता हूँ. एक दैट वाज अ क्वाइट बिग केस ऑफ होम बायर्स देयर इन गुड़गांव का था. तो उसके अंदर कंसर्न्ड, आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर इन द टॉकिंग, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि हम बड़े ऑटोनोमस होकर बात कर रहे हैं. तो हम एडिंग माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आल्सो देयर इन, सो दैट आई थिंक यू विल स्माइलिंग ऑफ द ऑडियंस शोज दैट यू आर लाइकिंग इट. यस, हाँ, मैं आपको बताता हूँ. अदरवाइज के अंदर ये हुआ, मैंने अदरवाइज वर्ड इस करके लिखा कि व्हाट हैपेंड कि एक बहुत अच्छा केस था होम बायर्स का. तो होम बायर्स ने मेरे को सिलेक्ट करा कि अनलकली वो जो प्रेजेंट आरपी था उसके अगेंस्ट कुछ आईबीबीआई ने प्रोसीडिंग्स कर दी, तो उसको स्टेन कर दिया गया फॉर कंटिन्यू हिज असाइनमेंट. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच सीओसी कंसिस्टिंग ऑफ होम बायर्स प्रपोज माय नेम फॉर अपॉइंटमेंट देयर. But there was when they proposed my name, there was a very, very big opposition from mainly from the promoters. That was ultimately उसके अंदर CRP प्रोसेस ही खत्म हो गया. वो एक बात की बात है, लेकिन उस समय की जो बात है वो ये था. तो एंड कोर्ट वाज रियली इन डॉल्ड्रम कि क्या करें, कैसे करें. होम बायर्स जो एक मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स हैं सीओसी के अंदर, उनकी बात मानी जाए. आई थिंक दे वर हैविंग अराउंड 70% स्टेक देयर, या फिर जो डाटाज है उनकी बात मानी जाए. अल्टीमेटली दे डिड नॉट अपॉइंटेड मी. दे सेड कि लेट्स मेंटेन द इंडिपेंडेंस, चाहे हम मनोज नंजी को अपॉइंट करें या पैनल में से किसी और बंदे को अपॉइंट करें, काम तो उसने दोनों ने मिलकर एक ही करना है. तो लेट्स हैव द रजामंदी ऑफ एवरीबॉडी एंड गेट अपॉइंटेड टू अदर पर्सन. तो इन एनी केस that's a nice practical experience I shared with you. चलिए, the tenure of this panel was 6 months and prerequisite for eligibility the panel was that IP must be holding valid AFA for the whole 6 months period. Since AFA was issued for 12 months period only, it resulted in an anomaly whereas half of IP community get empaneled only in a 6 months out of 1 year.
it deprives them of opportunity of getting work from adjudicating authority. Now, this anomaly has been removed by substituting subclause 6 in clause 12E in para 6 of schedule of agency regulation, whereas the validity of the EFA has been extended till 30th June, 31st December, subject to age restriction of 70 years. इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे सपोज कर लो आज क्या कहते हैं हमारी 10 फरवरी को किसी का एक्सपायर हो रहा है, तो उसने अगर अप्लाई करा तो जो भी उसने यानी कि हमारे को आई थिंक 30 डेज पहले तक हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको 6 महीने ऐड करके उसको 9 जुलाई तक का मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो वैलिडिटी होगी ये रहेगी 31 दिसंबर 2024 तक की। तो दैट इज द अमेंडमेंट ब्रॉट इन देयर, और उसका लॉजिक क्या है दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। और इसमें कुछ अगर अनुराधा जी ऐड करना चाहें तो वेलकम प्लीज। सर, तो जो एग्जिस्टिंग एएफएस हैं, जैसे अभी मेरा एएफए एक्सपायर होगा मई में, तो क्या मुझे मई में अप्लाई करना चाहिए, और आई कैन वेट टिल जून बिकॉज द वैलिडिटी इज टिल जून एंड देन आई गेट टू अप्लाई एंड आई माय एएफए विल बी वैलिड टिल डिसम्बर? अनुराधा जी, आपकी वैलिडिटी जून तक है ही नहीं, आपकी है ही नहीं। वैलिडिटी मई तक है। जी जब सर। आप मई में अप्लाई करोगे तो ये आपका जाके बनेगा अप्रोक्सीमेटली क्या कहते हैं अक्टूबर के आसपास तक, कि इसका 6 महीने होगा। उस समय करेक्ट। इसकी वैलिडिटी जो है अक्टूबर से 31 दिसंबर एक्सटेंड हो जाएगी। सो मतलब अभी तो हमको रेन्यू करवाना ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, और हर बारी ऐसे ही करना है। हाँ। उसकी यानी कि फिर अक्टूबर में जाके फिर आपको करवाना है। डोंट थिंक ऑफ कि आपको जो है आपकी जो वो व्हाट आई मीन टू से दैट कि जो अच्छा, तो एएफए है एएफए की दैट डेट्स गेट चेंज एक्सटेंडेड। नहीं होगी? हाँ जी, हाँ जी, वैलिडिटी उसकी जो है वो तब तक वैलिडिटी। कर दिया गया। या वर्ड वैलिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और यू लुक लाइक टू बी यंग, अगर इन बिटवीन आप 70 साल के हो गए तब भी आपकी वैलिडिटी तभी तक रहेगी। जी सर, सर थैंक ये यू। किसी का ऐसे अक्टूबर में एक्सपायर हो रहा है, तो उसको फिर अक्टूबर में जब वो अप्लाई करेगा तो वो जनवरी 25 से स्टार्ट होगा उसका वैलिडिटी? नहीं सर, जो जिसका अक्टूबर में एक्सपायर हो रहा है, जब वो अक्टूबर में उसको खत्म करेगा तो वो उसको 6 महीने अक्टूबर के बाद आप ऐड कर लीजिए। नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसका मार्च 25 में एक्सपायर होगा, जिसकी वैलिडिटी होगी जून 25 तक की। ओके 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 ओके। तो सर क्या जिनका अक्टूबर में एक्सपायर हो रहा है, क्या वो 30 सितंबर को कर सकते हैं अप्लाई? आई थिंक 30 डेज का टाइम होता है, 30 डेज से पहले कभी भी आप कर सकते हो, विद इन तो 30 डेज मतलब कभी भी कर सकते हो। उस केस में फिर मार्च जून का फिर भी नहीं कवर होगा ना, जून के बाद में ही करना पड़ेगा? सर जून की आपको जरूरत क्या है, आपको जून का तभी आपका वैलिड है ना। हाँ हाँ। जून का पैनल निकल गया, जून के पैनल के अंदर आपने कुछ करना नहीं। और जब आप वो करोगे, आप क्या कहते हैं जब वो नेक्स्ट ईयर हाफ ईयर का पैनल आएगा तो उस समय लिस्ट। आप एम विल पैनल। गेट बेनिफिटेड। एक बार गैप रहेगा मतलब बेसिकली, मोटा मोटा। नहीं सर, एक तो मेरे ख्याल 45 डेज हैं इंस्टेड ऑफ 30 हाँ, डेज, यू 45 कैन डेज होंगे मे बी, 45 दैट days कैलकुलेशन before you यू can कांट join. रिमेंबर। So या my understanding to this is कि इम्पैनलमेंट के लिए लाइक जैसे हम कह रहे हैं मई में है किसी का, तो अर्लियर इट वाज कि आप इम्पैनलमेंट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते थे बिकॉज यू वर रिक्वायर्ड टू टिल 30th of July, sorry June. जून। Okay, now you can apply if you have till May. आप इम्पैनलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहले आप अप्लाई ही नहीं कर सकते थे बिकॉज यू कुड अप्लाई ओनली फॉर वन टाइम, वन आउट ऑफ द 1 year you could apply only for 1 year, but now you can नहीं, apply आप for both 6 months। both of them. नहीं सर, ऐसा नहीं था, पैनल में अप्लाई कर सकते थे, वो आपको पैनल में लेते नहीं थे बिकॉज सर ऑफ वही योर बात तो वही ना, वो पैनल उसका क्योंकि वो उसमें लिखा होता था ना कि यू शुड योर ओपन इम्पैनलमेंट शुड बी है जी, ओपन ही नहीं होता था, वो अप्लाई कर नहीं ओपन ही सकते नहीं थे होता वो। था सर, पहले नहीं अप्लाई कर अच्छा, सकते थे, ओपन वो ही नहीं आपको होता था, 6 मैं months ट्राई का ही नहीं करता मिलता था था. कभी, तो हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इट्स यू नो अल्टीमेटली It's a जो welcome ऑब्जेक्टिव है। welcome to this is only that now you can apply if you have a valid AFA. हाँ जी, हाँ That जी, हाँ is, जी। अब पैनल में सबका नाम रहेगा 100% थ्रू आउट द ईयर, सर दैट एक मेरे को मींस। बात बताइए, वाई पीपल वी आर सो एक्साइटेड विद द पैनल, काम तो मिलता नहीं एनसीएलटी से, हार्डली जो यंग लोग होते हैं जिनको कोई असाइनमेंट नहीं मिली होती। मेरे को भी जब मैंने 2017 में करा था तब आई थिंक 1 या 2 असाइनमेंट मिली थी, उसके बाद आज तक कभी कोई असाइनमेंट नहीं मिली। सर कोई पर और सभी बेनिफिट है तो काम, बता, शेयर करो। सर सभी का काम, मतलब मेरा काम मैं बता रही हूँ, मेरा भी फर्स्ट असाइनमेंट मुझे एम्पैनलमेंट से ही मिला है, उसके बाद कुछ नहीं मिला है, बट फर्स्ट काम वहीं से मिला है। बट सर एक चीज है दैट्स ना ग्रेट, कि दैट्स कई ग्रेट। बैंक्स तो So इसके बेसिस पे it's a प्रोसीड करते it's हैं। a good omen. I mean, I should say, huh?
to get the first assignment through the panel. नहीं I नहीं hope एक्चुअली so. उसके अंदर ना उनका जो मार्किंग सिस्टम है ना, तो उसको वेटेज ज्यादा दी जाती है जिसको आप क्या नाम है इसका, जिसने कोई असाइनमेंट नहीं करी होती। Yes. जैसे ही आप एक आधी असाइनमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको नो मार्केट वेटेज इज गिवन। लेकिन इसका मैंने एक इनडायरेक्ट बेनिफिट देखा है कि जैसे हम लोग प्राइवेट क्लाइंट्स के अंदर दाएं बाएं बातचीत करते हैं ना, तो जैसे भी आप किसी प्राइवेट क्लाइंट को कहते हो, किसी एनबीएफसी को कहते हो, या फॉर्म 2 जब देते हो उनको फॉर द पर्पज ऑफ योर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट, तो वो पूछ लेता है आप आईबीबी में पैनल्ड हो या नहीं हो, दैट ही जनरली आस्क। तो हो सकता है ये मेरे साथ पिक्यूलियर हो, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा सा उसको एक ना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अगर आप उसको कह देते हो कि हाँ भैया मैं आईबीबी में पैनल्ड हूँ, हाँ उसको ये कहो कि मैं नहीं पैनल्ड हूँ, तो उसको एक्सप्लेन करो कि मैं क्यों नहीं हूँ। तो दैट मार्केटिंग इज विल बी देयर, व्हाट आई फील, जो मैंने देखा है प्रैक्टिकली करते In हुए। fact, sir, because of probably this reason, what you have stated just now, many of them who have already done 10, 20 assignments are also getting empaneled. Because banks have this particular requirement, I believe, where they हाँ ask, जी, हाँ are जी, you हाँ जी। empaneled with IBBI or not? हाँ उसमें यस, अनुराधा जी ने बिल्कुल ठीक है। उसमें एक और बात होती है, जैसे सपोज कर लो ये बैंक का अगर किसी का पैनल स्टार्ट होता है, तो वो ये कहता है कि आपको ऑलरेडी 2 जगह पे पैनल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर जब बैंक ऑफ बड़ौदा का शायद पैनल खुला था 6 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि यू शुड बी पैनल विद द 2 एजेंसीज। हाँ, तो उसमें आप एक लिख सकते हो कि आप आईबीबीआई में पैनल्ड हो, और एक आधे आप किसी और बैंक के अंदर पैनल्ड हो, तो दैट यू कैन आल्सो राइट यस। एक यानी कि ये जो अनुराधा जी ने कहा, उसके अलावा एक बेनिफिट मैंने और बता दिया Right. पैनलमेंट का। तो और सर और भी बाकी ऑडियंस ही मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बताए ना कि उनको क्या बेनिफिट हुआ पैनलमेंट से, दे कैन आल्सो शेयर। पर्सनल चलिए, गारंटर का अपॉइंटमेंट होता है अभी पैनल से ज्यादा। पर्सनल ग्रंटर का सर 94 95 के अंदर मैंने अभी तो हो जितनी रहा है। एप्लीकेशन देखी है, सब बंदा अपना ही दे देता है नाम, जो कि बैंक वाले अपना 95 के अंदर दे देते हैं नाम। 94 के अंदर जब तक वो किसी आईपी के पास जाता नहीं है, एडवोकेट के पास जाता नहीं है, तो 94 की एप्लीकेशन का उसको समझ नहीं आता। जब वो किसी एडवोकेट आईपी के पास चला गया, तो फिर तो उसी का नाम चला जाएगा। सर चलिए, इवन देन कोलकाता में तो हो रहा है सर, कोलकाता में सर, तो हो रहा है। हाँ कलकत्ता सर, में but हो रहा है। कुछ केसेस मैं भी हाँ बताऊं। जी, हाँ जी। हैदराबाद में कैसा हो रहा है, इवन इफ यू आर सजेस्टिंग somebody's name as an IP, NCLT is insisting that the person should be appointed from IBBI panel, and even though the name is given, they are saying, okay, we are not appointing this person, and they are giving the assignment to somebody who's empaneled with IBBI. I mean, with NCLT for that 6 months. एडवोकेट शर्मा जी, उन तरह के केसेस आप ले लो और एनसीएलटी में अपील फाइल करो, यू विल जी। डेफिनेटली विन इट। और पक्का लो जी आप, ये Right. दिस इज बैड इन लॉ, हाउ दे कैन Yeah, से which लाइक is दैट। ideally it cannot happen. I don't know. Is there any? I mean, I'm also quite surprised. Is there कोई reason दे रहे हैं वो, या I mean it's just a No, regular procedure? they are not giving any reason. Simply they are telling, okay, we are not appointing this person, we are appointing that person. That's all. That it can't be correct. It can't be यस correct. यस यस। It is. अनुराधा जी, आप अपने एरिया के केसेस ये अरवीना जी को अरविंद रेफर को करो, देखो। शी विल जी डेफिनेटली जी। हेल्प दैट पर्टिकुलर आईपीएस टू गेट रिड ऑफ दिस Sure, sir. irrational orders of NCLT. Those IPs are also exploring how to go about it. I'm sure they must be filing applications. चलिए, इसमें वो एक बड़ा आजकल टिकी सा इशू आ रहा है जो ऑल ओवर इंडिया पे इन्होंने, एक हमारे रेगुलेटर ने, जो आईबीबीआई ने कह दिया था कि आरपी को लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं करेंगे। वो एक जी इन्होंने सर। एक लेटर लिख दिया था। दैट हैज अ गॉट ऑफ रिसेंटमेंट अमंग ऑल दी आईपी कम्युनिटीज। तो उसमें हमारी अरवीना जी जैसे एडवोकेट कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे। दे आर स्टिल डोमिनेटिंग इन दैट वे। मोस्ट ऑफ द एनसीएलटी बेंचेस आर following the dictate of IBBI and not allowing, not continuing RP as a liquidator. चलिए, कोई बात नहीं, लगा रहता है ये कहते हैं ना वो, हाँ। कैट एंड माउस रेस तो लगी रहेगी किसी न किसी पॉइंट पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, now I clubbed these two quizzes Sir, before together. that, there is a query in the chat box that whether the हाँ जी, हाँ जी। IRP or RP can be appointed if he is not in the IBBI list. Appointed by whom? Appointed by the corporate debtor or the operational creditor or the financial creditor. That they can do. It is only the adjudicating authority, when they are appointing, they have to appoint out of the list. Otherwise, CD, OC and FC can definitely appoint anybody. Empanelment is not a criteria. Thank you.
इस केस में भी एक मेरे को एक बात याद आई, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द हैदराबाद के केस में उन्होंने ये करा था कि एक रिनाउंड आईपी को, एक पर्टिकुलर हैदराबाद को केस था, तो उन्होंने कैलकाटा के आईपी को अपॉइंट कर दिया था, हाँ that सर। was and there was a great resentment among all the हैदराबाद आईपी कि भाई क्या बात है, आपको पूरे हैदराबाद के अंदर कोई आईपी पसंद नहीं आया, बट इन एनी केस चलिए सर ये इस तरह हैदराबाद के के आईपीएस जब मुंबई के लिए अपॉइंट होते हैं तब ये रिसेंटमेंट नहीं आता है हैदराबाद से। मुंबई इज अ बिग सिटी, दिल्ली इज अ बिग सिटी, यहाँ पता नहीं चलता कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट एज फार एज आई वाज अटेंडिंग अ केस कल, हाँ कल ही की बात है, मैं बेंगलोर का एक कोई मेरी कोई पर्टिकुलर केस था, तो आई वाज अटेंडिंग इट देयर, तो मैंने देखा उसके अंदर द बेंगलोर बेंच इज हैंडलिंग टू बेंचेस, वन इज कोची और अनदर इज बेंगलोर बेंच, तो बेंगलोर बेंच के अंदर सिर्फ 22-23 केसेस थे, hardly there were 22, 23 cases. And honorable member was so proficient and so, well versed with all those cases. He was able to finish it up so quickly. और उसकी जगह पे हम लोग ये देखें, हमारे यहाँ प्रिंसिपल बेंच के अंदर आप देख लो, तो इसके अंदर बैचेस जो होते हैं ना, जैसे वो पहले इन्होंने एक बैचेस बनाने शुरू कर दिए थे, एडमिशन के करने कर दिए थे, परफेक्ट ट्रांसैक्शंस के कर दिए थे, पीजी के बैचेस कर दिया था, एक एक बैच के अंदर ही 50-50 केस होते हैं, और डेली के अगर हम इनकी कॉज लिस्ट देखें, तो it touches around 150 on the average. Oh my goodness. Yes, you can look into this principal bench list, और होता ही है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर केस के अंदर अरवीना जैसे एडवोकेट आ गए और उन्होंने उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टक अप कर दिया, तो उसके ऊपर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लग जाते थे, और बाकी सब केसेस को जो होता था फिर एज इट इज डेट ही मिलती थी, True, and sir. we हम IPs and everything. हम क्या हाँ जी, ही हाँ जी, अटका प्लीज। हम क्या ही अटकाते हैं सर, अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं और चलते ही जाए छोटे से पॉइंट पे भी, तो कुछ करा नहीं जा सकता। नहीं, देखो, you are helping, you are the court officer, Yes, you are helping the court, and in that help, if judges require more time from you, that correct. has to be there, that has to be Correct, there. but no, I You agree. Delhi, and in fact, Bombay in some benches, the list are big. Like there are quite a lot of matters listed every day. And this issue, I mean, I don't know why we're not till date able to resolve. अच्छा, इसमें एक बात आपको और बताता हूँ, that you love to listen from me. हमारे आईबीसी आने से पहले हमारे यहाँ पे जो एक रिकवरी मैकेनिज्म था, उनमें से एक प्रोविडेंशियल एक्ट भी था 1920 का, और एक Insolvency. प्रेसिडेंसी एक्ट भी था जिसके Correct, अंदर रिकवरी करी जा सकती थी, ये दोनों के दोनों एक्ट 1920 के थे। correct. तो इन एक्ट के अंदर टिल डेट, यानी कि अभी भी एक्ट लाइव है, अलॉन्ग विद आईबीसी यू कैन फाइल एप्लीकेशन इन दैट आल्सो, तो लेकिन इसको डिसाइड होने में 20-25 साल, 30 साल लग जाते थे, इस करके इट्स बिकम इन्फेक्शियस, कोई इसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं था। तो इसके अंदर जो हमने एक बार स्टडी करी थी, तो इसके अंदर 500-600 केस जो टोटल हुए थे, वो सारे के सारे केसेस जो हुए थे, दैट वाज फ्रॉम द either from the Chennai or somewhere from the western area, and very little of cases are from the Calcutta side also. Northern India से एक भी केस उसके अंदर नहीं हुआ था till date. और जब आईबीसी आया, तो आईबीसी के अंदर मैक्सिमम केसेस जो हैं, दैट इज हैपनिंग इन दिल्ली ओनली. If you Not see really. the maximum number of cases IBC के अंदर, that is, we have a 6 benches here. It's not that we have a 1 bench here. Yes. 6 हाँ. benches are there. और उसके बावजूद भी चलिए, लोग हमारे को मारेंगे, बोलेंगे बुलाया था हमारे को इन्होंने रेगुलेशन सिखाने के लिए, और बातें अपनी अपनी करी जा रहे हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. लेट्स Yes. मूव फॉरवर्ड नाउ. या इसमें एज 70 वाली जो है, तो ये थोड़ा सा है, अगर 70 इयर्स की है तो इसकी भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड है. लेट्स सी व्हाट कॉल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टेक फॉर दैट. चलिए, लेट्स मूव टू फर्दर. पर्सनल कंटेंट टू कॉर्पोरेट डेटर, बैंक्रप्सी रेगुलेशन. इसके अंदर ओमिशन करा गया है रेगुलेशन 4 के अंदर, एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज सी, और यानी कि पीजी टू सीडी में, और प्रिजो 6 रेगुलेशन 5 बैंक्रप्सी के अंदर ओमिशन करा गया है. ये दोनों के दोनों ओमिशन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियली हैं. It's quite simple. It's very welcome step and a very simple regulation. I just read it, with that reading, the things will be understood by everybody. Earlier, IRP, RP liquidator were not allowed to be appointed as RP for PG and bankruptcy cases.
The reason of the same was unknown, and in fact, IRP-RP liquidator was knowing the best of PG due to his personal experience in CIRP liquidation process of CD. Now, this anomaly has been removed by omitting explanation C to regulation 4 in the case of PG to CD regulation and explanation C to regulation 3 in the case of bankruptcy regulation. सिमिलरली ये एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। इसके बारे में मेरी माइक प्लीज वुड लाइक टू से समथिंग और आई मूव फॉरवर्ड। No, sir, चलिए, it is a welcome move. Yeah. It's a Now, या welcome. दिस इज वेलकम Yes, sir. मूव। देखिए, होना भी चाहिए था ये। इन्होंने पता नहीं क्यों डाला था इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन देखिए, इसके अंदर अनुराधा जी एक नुकसान है, यू यंग पीपल, कि पहले ये होता था कि आरपी ने चलो केस कर लिया। पीजी के अंदर जनरली 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग होते थे, बिकॉज गारंटी जो होती थी तो सब डायरेक्टर से बैंक वाले ले लेते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट दे बिकम पीजी। तो वो जो पीजी पहले अर्लियर प्रिजन्स के अकॉर्डिंगली वर्क जो था नए आईपीएस को मिल जाता था, maybe work get scattered among IPs। तो अब वो जो है that will remain skewed, कि वो जो आरपी जो शुरू का होगा वो ये कहेगा भाई मेरी ये वाली असाइनमेंट तो खत्म होगी, मॉनिटरिंग कमेटी में मेरे को ले लिया या नहीं ले लिया, आई डोंट नो, आई एम ऑलरेडी फ्री फ्रॉम दिस ARP प्रोसेस। तो अब मेरे को एक let me give the appointment of PG there। That will be, that will have a bit loss to the young IPs or other IPs also। तो चलिए, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि वो बरसात आने पे कोई खुश होता है और कोई नाराज होता है, तो it's like that। You must have heard that the joke also। If rain comes, it is good for the farmer, but it is bad for the वो जिसको जो बर्तन वगैरह बनाता है वो मिट्टी के, उसके लिए। चलिए, Potter. या पोर्टर, यस दैट्स गुड, ये दैट्स एग्जैक्ट वर्ड। चलिए, इसके बाद एक सेकंड इसके अंदर चेंज आया है। सिमिलरली अर्लियर बैंकरप्सी ट्रस्टी वाज नॉट अलाउड टू बी अपॉइंटेड। ये तो सेम हो गया, नहीं इसमें एक चेंज हो रहा है रीपेमेंट प्लान का, दैट इज देयर। एक नया रेगुलेशन इंसर्टेड करा गया है, रेगुलेशन 17A। what it says is that further in case of non-receipt of repayment plan by RP, it was RP's discretion to hold or not hold meeting of creditors. Now he is compulsorily required to inform MSC of non-receipt of repayment plan as per newly inserted regulation 17A of PG to CD regulation। इसके पीछे लॉजिक ये है, व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑफ होल रेगुलेशन इज दैट, कि अगर कोई रीपेमेंट प्लान नहीं आता तो इसके अंदर ना, जैसे मैंने पीजी टू सीडी के काफी सारे केसेस करे हैं, तो इसमें मैं आपको आई गिव यू वन इंटरेस्टिंग एग्जांपल आल्सो। व्हाट हैपन इज दैट कि जो इसके अंदर आई थिंक 21 डेज का मैंडेटरी आपको नोटिस देना होता है, ये ऑल द क्रेडिटर्स को टू होल्ड 21 डे था, 14 डेज मे बी, ओके, वो देना पड़ता है। तो ये जो पूरा पूरा प्रोसेस है ना, ये इसके अंदर 15-20 दिन लग जाते हैं जब भी आप कोई एमओसी की मीटिंग करते हो। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर मेनी टाइम्स अगर वो बिजनेस कर रहा है बंदा, तो उसके क्रेडिटर्स की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी होती है। और यानी कि अगर सपोज कर लो कि बंदा बिजनेस कर रहा है, वो डायरेक्टर भी था और अपने नाम पे बिजनेस कर रहा था, तो उसके फिर क्रेडिट्स की लिस्ट काफ़ी एक्सटेंडेड हो जाती है, और यहाँ पे ईयर वगैरह का कंसेप्ट है नहीं है। तो एक इन नटशेल कहने का मतलब यह था कि इन दी केस ऑफ पीजी टू सीडी केसेस, हम लोग जब मीटिंग करते हैं, मीटिंग ऑफ क्रेडिट्स करते हैं, तो एक बड़ी इट्स क्वाइट कम्बरसम, एंड 180 डेज का इसके अंदर डेज प्रिस्क्राइब्ड है हमारे को करने के लिए, पूरा का पूरा काम करने के लिए। तो इन दैट केस जस्ट टू जो आईबीसी का ऑब्जेक्टिव है टाइमलीनेस एंड ऑल दिस थिंग, तो ये प्रोविजन दिया गया, जब कोई रीपेमेंट प्लान ही नहीं है तो आप एमओसी की बिडिंग करके क्या करोगे, उनको क्या कहोगे कि ये है। उसमें तो सिंपल सी बात है कि एमओसी हैज टू टेक ए कॉल वेदर टू गो फॉर द बैंक्रप्सी और नॉट। So it was a good prison, but what happened in my case also, I was PG, I was RP for 5 PGs there। तो मस्ताना फूड करके एक कंपनी थी जिसके पर्सनल कंट्रोल का प्रिंसिपल बेंच के अंदर था। सेम सिचुएशन हैपेंड विद मी आल्सो, कि मैंने मीटिंग करी नहीं, एंड देन व्हेन आई फाइल्ड माय एप्लीकेशन देयर इन, तो प्रिंसिपल बेंच दिल्ली सेड नहीं जी, आप हम हमारे को क्या पता चलेगा कि वो जो है ये क्रेडिटर्स इसको असेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आप उनकी मीटिंग कर लो।
मैंने कहा जी चलिए, आप आपने डायरेक्शन दिया था, मैं उनकी मीटिंग कर लेता हूँ। जैसे ही उन्होंने उनकी डायरेक्शन दी, मैंने उनकी मीटिंग करी, तो ये गुरमीत सोधी वाला जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने तो केस आ गया, तो इस केस के बाद ये हो रहा था कि जितने भी PG to CD केसेस थे, सबके अगेंस्ट NCLT बेंचेस वाज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ये मैं आप बात कर रहा हूँ आज से 3.5 साल पहले की। आई वाज द इनिशियल पर्सन अपॉइंटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर देयर वन ऑफ द इनिशियल केसेस एज RP फॉर PG to CD केसेस। तो वो दिन से लेके आज के दिन तक केस पेंडिंग ही पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर, बिकॉज हार्डली 1.5-2 महीने पहले NCLTs ने केसेस सुनने शुरू करे। और अब वन ऑफ द अदर पॉइंट, दे आर द PG इज स्मार्ट, उसकी कुछ प्रॉपर्टी फंसी पड़ी है, तो ही डजंट वांट कि केस शुड गेट कंक्लूडेड, तो जब उसकी इंसॉल्वेंसी में जाए, ये एक नॉर्मल सी बात है, ये 95 की एप्लीकेशन थी। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि बिकॉज ऑफ दिस ओनली स्मॉल रीजन, हैड द जजेस टेकन 2.5 years ago a call on my suggestion कि repayment plan is not there, so then why should I call for the COC? So that case should have got settled at that time, और बैंक्रप्सी इमीडिएटली स्टार्ट उनकी हो जाती, तो वो भी खत्म हो गया होता। बट 2 साल से 2.5 साल से दैट केस इज लैंग्विशिंग, एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दैट विल लैंग्विश। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर वही आ जाती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी फीस फिक्स करी, प्रिज्यूमिंग दिस थिंग कि 180 डेज का टेनर है, 180 डेज की उन्होंने फीस फिक्स कर दी। उसके बाद रो के जब सुप्रीम कोर्ट ने अंदर केस किया, आई हैव टू अपॉइंट माय एडवोकेट टू अटेंड दैट पर्टिकुलर केस इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड the senior advocate who be attending the case on my behalf in the Supreme Court should be charging a huge fees also. It was a कहते हैं ना, बहुत बड़ी कश्मकश हुई SBI से फीस लेने के लिए। उन्होंने दी हमारे को थोड़ी सी फीस, बट दैट टू ओनली फॉर ए पर्टिकुलर टेन्योर। और अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है उस केस को रन करने का, SBI को तो हो ही रहा है, मैक्सिमम नुकसान मेरे को ही हो रहा है। कि मैं वो है, तो हो सकता है जो रेजिडेशन वाले नए प्रिजन्स आए हैं उनको यूज़ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेनी टाइम यू कांट टेक दैट कॉल ऑल्सो। तो स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग फॉर SBI और PNB और सम अदर बैंक, बिकॉज इन दैट केस दे मे रिमूव यू फॉर ऑल देयर फ्यूचर इम्पेयरमेंट्स ऑल्सो। हाँ, किसी इंडिविजुअल का हो जाए तो देन यू कैन थिंक ऑफ, तो बट बैंक के साथ आप ऐसा पंगा नहीं ले सकते। तो चलिए, कोई बात नहीं, लेट्स सर एक और बात थी इसमें, स्वीट जब एंड सॉर। रिपेमेंट प्लान नहीं आता था, at that time we would directly file application with adjudicating authority stating that we have not received any repayment plan and you can order for bankruptcy. In this case, what was happening is the creditors were not knowing what to do because there was no paper publication which was made again, that this company did not receive any, PG did not receive any repayment plan. So that is why probably they have added this, whether you receive or you don't receive, either ways you conduct a meeting of creditor so that they are well informed. नहीं, एक्चुअली अनुराधा जी, व्हाट आई फील इज दैट कि अगर सपोज करो रीपेमेंट प्लान नहीं आता था, तो मैंने तो यही करा था, मैंने तो MOC होल्ड करी थी, एंड आई टोल्ड देम कि भैया इनका रीपेमेंट प्लान नहीं आया। जब उनका नहीं आया तो मैं क्या करूं? नहीं आया तो नहीं आया ना, तो उन्होंने यही कहा मेरे को कि आप अपनी बैंक्रप्सी की एप्लीकेशन फाइल कर दो। इंफॉर्मेशन तो उनको MOC को देनी बनती है, उसके बिना तो कोर्ट भी नहीं सुनती हमारी बात, बिकॉज पहले यही ऑप्शनल था सर, पहले हाँ यही था तो ऑप्शनल होल्डिंग, हाँ, या आई एग्री विद यू, now इट they वाज have एब्सोल्युटली said ऑप्शनल। correct. या आई एग्री विद यू कि So, मैंने ये कर लिया, बट दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, दैट correct. वाज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, आई एग्री विद यू। Many RPs were not doing this sir because they said जब लॉ में रिक्वायर्ड नहीं है तो हम क्यों करें करके, बट फिर सामने क्रेडिटर बोलता है मुझे कैसे पता चलेगा कि आया है या नहीं आया है. That is why we experience our RPs are being hired and paid a lot, because we understand not only the law but practice of law also. ठीक है, so we can move to the But next. now it is mandatory whether we receive the repayment plan or no. We have Yes, to to we have inform to But MOC then is mandatory. if that is the case, because in the section, and we know that the section supersedes regulation, and section 106 says that it is not mandatory for the RP to conduct this meeting. सुनील जी, कभी हम ना एक सेमिनार रखे, वेबिनार, जहाँ आप मेरे यूट्यूब पे चले जाना, मैंने BG to CD पे वेबिनार्स लिए हुए हैं, तो ये पॉइंट हम उस समय डिस्कस करेंगे कि आई फुली इंडोर्स योर व्यू कि कोर्ट को जो है एक्सीड्स रेगुलेशन, रेगुलेशन इज सब्सिडरी टू द कोर्ट, लेकिन ये कोर्ट की इंटरप्रिटेशन, रेगुलेशन की इंटरप्रिटेशन, मेयर आप तो जो कर रहे हैं अल्टीमेटली एडजुडिकेटरी अथॉरिटी करती है। तो जब इस तरह का कोई बेनिफिशियल प्रोविजन हो क्रेडिटर्स के लिए, तो एडजुडिकेटरी अथॉरिटी
legally will allow you to take the shelter of section 106 exceeding regulation 17A. हाँ जी, ठीक है। अरविना जी आप क्या बट सर कहोगे? रेगुलेशन 106 तो ये कहता है ना कि अगर आपके पास जो रीपेमेंट प्लान आया है, इफ इट इज यू आर कन्विंस्ड कि ये दिस इज द बेस्ट विच वी कैन अचीव, सो इसलिए आपको मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप कहते हो तो मैं रेगुलेशन 106 खोल लेता हूँ, उसको पढ़ जी। लेता हूँ, बट आई थिंक दैट विल डाइवर्ट आवर टॉपिक। तो ठीक है, कोई नहीं व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट कि आई एग्री विद यू कि कोड विल सुपरसीड रेगुलेशन, लेकिन व्हेन नो इट्स सर, इंटरप्रिटेशन सर आनंद my सर point इस is चीज में in मैं कहना 1162 चाहूंगी 1162 clearly says the report referred in subsection 1 shall include that the repayment plan is in compliance with the provision of any law for the time being in force. B says the repayment plan has a reasonable prospect of being approved and implemented, and there is a necessity of summoning a meeting of the creditor if required to consider the repayment. यस, अब आपने सेक्शन पढ़ लिया तो बिल्कुल आपने इसकी सही इंटरप्रिटेशन दी है। आई एग्री विद यू कि सेक्शन मैंडेटरी नहीं करता फॉर होल्डिंग दिस पर्टिकुलर मीटिंग, जो कि अब रेगुलेशन 17A मैंडेटरी कर रहा है। बट एट द सेम टाइम मेरा व्यू इसके अंदर आएगा कि व्हेन यू विल फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दे विल डेफिनेटली डायरेक्ट यू Yes. टू होल्ड दैट। तो मनोज मैं सर थोड़ा सा ये कंफ्यूज ये हार्मोनियस था सर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो का रूल लैंग्वेज जो है आपने लिखी हुई है ना इसमें, वो उसमें लिखा है फॉलो करेंगे हम। in case of non receipt of the repayment plan by RP, it was RP's discretion. So whether it is for the non payment non receipt or it is on the receipt also, नहीं because नहीं, सीट पे तो 106 is डिस्कशन saying कभी about होता the ही नहीं है, receipt, नॉन सीट पे ही होता non है। receipt की तो वो बात ही नहीं कर रहा। 106 is only telling That is about when you have received the repayment. वही सुनील जी, ये जो रेगुलेशन आया है अभी, जी, अमेंडमेंट जो आया है, इट इज ओनली फॉर इन केस ऑफ नॉन रिसीट ऑफ रिपेमेंट that प्लान। is what I am saying. correct. So there is a slight difference. रिपेमेंट प्लान में तो पहले से ही सेक्शन में ही था कि दैट यू हैव टू कॉल फॉर द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, Right. right? It is a non receipt of repayment plans. It was optional. In fact, it was never compulsory, so they were not doing it. Now they say you cannot opt the discretion. You have to compulsorily hold the meeting, even in case of non receipt of repayment plan. Yes. Hope I'm clear. Arvina Yes, ji, yes. you want to say something, please? So I just wanted to say that only that this is with respect to non-receipt, because receipt के time पे already था. So when there is no non-receipt of the repayment plan, then you have to. Discretion is no more there, of course. Then you have to, and of course the adjudicating authority now, as you rightly said, Manoj ji, that they will ask for it, that whether we fault or not. और वो prospective और retrospective दोनों में लगाएंगे. Pending and otherwise also, they may ask you to go back and tell them. Even if this बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको लाइव application एग्जांपल दे ही दिया, 2.5 साल वैसे पहले का नहीं लाइव होता, एग्जांपल दे दिया। मनोज सर वैसे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, ये कोड और सेक्शंस जो है और रेगुलेशंस डिफरेंट नहीं है, और हम एक हार्मोनियस सेम है। कंस्ट्रक्शन का रूल फॉलो करते हैं। करेक्ट जब करेक्ट भी हम कोड को या नहीं नहीं, मैंने लॉ को डिफरेंट की बात इंटरप्रेट नहीं कही, करते हैं, मैंने ये कहा कि इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट देन आई मीन टू से देन कोड विल प्रिवेल, बट इफ हाँ रेगुलेशन इज सप्लीमेंटिंग कोड, इट्स नॉट अ डिफरेंट, ये इफ सर देयर वही इज अ मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट। सप्लीमेंट कर रही हूँ कि इस चीज में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हाँ, बहुत क्लियर प्रोविजंस हैं ये, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सो इसमें सिर्फ ओके नॉन ओके नॉन रिसिप्ट ओके ऑफ ओके, रिपेमेंट नॉन प्लान पे सीट, किया है। ओके। हाँ, सो तो नॉन रिसीट पे किया है, सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट एज सच। ओके, तो सुनील जी ने हमारे को कंफ्यूज कर दिया। इन एनी केस डिस्कशन में कंफ्यूजन से ही एजुकेशन आती Clarity है। मिलती है। सुनील जी, वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर दैट। No, sir, it's all right, sir. चलिए जी आगे बढ़े। Yes, तो sir. यू अनुराधा जी या अरवीना जी या प्रवीण, यदि कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नथिंग। नहीं सर, आगे Hey, sir, बढ़ते we हैं। have discussed a lot on this. Now we can move to Yes, the next yes. one. It's already 5:30. चलिए, इट्स ऑलरेडी कितना टाइम हो गया? 5:30 सर, 5:30। 5:30, देख sir. लीजिए, 2 घंटे मैंने बता दिए किसी भी तरह से। टेल प्रवीण जी दैट आई एम एक्सपर्ट इन डिवोटिंग टाइम आल्सो। 5:24, यस बिल्कुल एग्जैक्टली। चलिए ओके, मेरे सामने पता नहीं घड़ी पे 5:09 आ रहा था, तो आई वाज कंफ्यूज। चलिए 5:24 है जी। चलिए हम्म। कोई बात नहीं जी, हमने 2 घंटे बताने थे। आई थिंक आई नीड टू गिव सम टाइम टू दिस वन मोर डेलिब्रेशन ऑन Winner. दिस
है ना, वो भी है ना. ओके, आई मूव फास्ट नाउ, प्लीज बेयर विद मी, आई मूव फास्ट नाउ. अच्छा जी, एक वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं. वो क्या अमेंडमेंट्स आई हैं ये मैं आपको बता देता हूँ. आई शैल फिनिश माय टॉपिक इन अनदर 15 मिनट. तो 5 मिनट दूंगा मैं, 5 मिनट इसको, 5 मिनट दोनों सर्कुलर्स को. Please cooperate me, Anuradha ji and Arvina ji. Earlier, in case of expected adverse orders during assessment proceedings before statutory authorities, mainly income tax, GST, CDs are going for voluntary liquidation process before issuing of demands by statutory authorities due to the fact that at the time of filing voluntary liquidation application, they were required to declare of no debt at that time only. Technically, it was correct also, as demand is raised only after completion of assessment proceedings, which generally happens only at the end of the time-bearing date. CD take advantage of this intervening period and files declaration of no debt despite knowing huge expected demands in due course from statutory authorities. Now, this loophole has been plugged by adding a new clause 3 to Regulation 3, Sub-Regulation 1, Sub-Regulation A in the voluntary liquidation regulation, whereas now CD has to compulsorily provide that he has made sufficient provision to meet the obligations arising on account of pending proceedings or assessments before statutory authorities and pending litigation. ठीक है जी, आगे बढ़े. सर यहाँ पे एक क्वेश्चन था सर. सर, when we file for voluntary liquidation, we have to give a declaration of solvency, right? हाँ जी, बिल्कुल. When we conduct the EGM, we have to also file a बिल्कुल declaration of solvency. हाँ, So देनी पड़ती है. when we give declaration of solvency, we write that there are no pending litigations in the corporate debtor. So in We that case, write no debt is pending. and we also write that there are no pending litigations. अब जरा डिक्लेरेशन को निकालो, उसके अंदर डेट का लिखते हैं कि देयर इज नो डेट पेंडिंग. लिटिगेशन तो हम कह ही नहीं सकते कि पेंडिंग नहीं है. लिटिगेशन का उसमें नहीं है, उसमें खाली डेट्स का है. as मनोज जी से, it's basically the debt, and if there is a debt pending, it can be Met out of the proceeds. it can be repaid from the proceeds of the liquidation. Right. Okay. I stand corrected. Thank you. Thank you ji, thank you very much for helping me. Yes, sir. Otherwise it's very difficult to impress ladies. I've Oh seen my. it with my sister and brother. All the time मैं ही कहता हूँ भैया मैं हार गया. चलिए, thank you, let's move forward. The liquidation processes many a times gets extended from stipulated period of 90 to 270 days, and in that case, liquidator was required to hold annual meeting of contributors after expiry of 12 months under Regulation 37, Regulation 2. Now, the period of 12 months has been reduced to 90 to 70 days, along with compulsorily giving reasons for not completing the process within stipulated time period, and explanation of additional time required for completing the process by inserting a new clause 7 therein. कुछ नहीं है जी इसके अंदर. जो पहले 12 महीने बाद हमारे को मीटिंग करनी होती थी इन केस ऑफ एक्सटेंशन, अब उसको 90 और 270 दिन के अंदर करनी है. और इसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन ऐड करनी पड़ेगी कि भैया आपको और कितना टाइम चाहिए करने के लिए. दैट इज ऑल, क्वाइट वेरी सिंपल प्रिजन. लेकिन लिक्विडेटर्स का, वॉलंटरी लिक्विडेटर्स का काम बढ़ा दिया है. बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया. सेक्शन 59 वैसे ही एक सेक्शन था, दिखने में एक सेक्शन लगता था, बट इट वाज क्लबिंग ऑफ लॉट मैनी 30-35 सेक्शंस. चलिए जी, similarly regulation 8(1)(b) has been amended to omit annual word in the status report, and a duty has been casted on liquidator for filing of a status report within 7 days with IBBI as per newly inserted sub regulation 4 to regulation 37. हम एक आई थिंक आई रिमेम्बर मेरा ऑफिस वॉलंटरी लिक्विडेशन के केस में करता था ऑलरेडी फाइलिंग विद द IBBI. उनकी एक स्पेसिफाइड वो थी, ईमेल थी, उसके ऊपर पोर्टल पे तो जाता नहीं था ये. तो चलिए, नाउ इट हैज बीन मेड पार्ट ऑफ द लॉ. Another relaxation is also given to stakeholders under Regulation 39 to claim their money from liquidator even after transfer of funds by him in corporate voluntary liquidation account maintained by the IBBI till dissolution order is passed by the adjudicating authority by filling Form I. इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एग्जिस्टिंग हम लोग जो केसेस करते थे उसके अंदर क्या होता था कि आपने जब भी वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंदर लास्ट में डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो उसके अंदर आपको जितने भी आपके पास प्रोसीड्स होते थे सारी की सारी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होती थी.
तो अगर कोई बंदा नहीं लेने आता था तो वी डोंट वांट टू गेट एक्सटेंशन ऑफ गेटिंग एक्सटेंडेड ऑफ पीरियड, तो हम लोग इसको उठा के सीधा एक आईबीबीआई का जो अकाउंट था उसके अंदर जमा करा देते थे। होता यह था कि हमारी अभी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही है और कोई कंट्रीब्यूटी कहता है भाई मेरे को पैसे दे दो, तो जब वो कह देता था देन वी से टू हिम कि भैया आप तो पैसे आईबीबीआई के पास चले गए, अब आपने फॉर्म आई भर के जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है वहां पे उसके साथ करो। नो रिलैक्सेशन हैज बीन गिवन till this dissolution is allowed by the adjudicating authority. You can get that money from the liquidator also. Liquidator को IBBI दे देगा, तो that will be the process eased out. तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है कंट्रीब्यूटर्स को पैसे रिसीव करने के लिए। I move forward, please. Yes, sir. ओके, सर्कुलर 64, सर्कुलर 64 और सर्कुलर 65, ये कहने को तो बड़े छोटे छोटे से सर्कुलर हैं, लेकिन इसके अंदर जो बेनिफिट है ना वो इमेंस है। क्या बेनिफिट है इनके अंदर? इमेंस बेनिफिट है। लेट्स रीड दैट। यस, there was a great apprehension among IPs pertaining to issue of show cause notice under Regulation 11 of Inspection and Investigation Regulation 2017 to be to the assigned partner or director or to the all partners or director of the IPE. Now it has been clarified that it shall be issued to the assigned partner director only until unless there are either repeated instances of contravention against one or more partners or directors of the IPE or instances of systematic failure on the part of the IPE. ये Arvina ji, would you like to add in it or should we move forward? Sorry, I think there's some miss. Can you hear me? Yeah, we are hearing you. Yes, Yes, please. yes. We can move forward. I'll add in at the end only now. Okay, great. Yeah. चलिए, Class 22 Code of Conduct specified in for schedule of IP regulation 6 appointment of IP to maximum 10 cases, including not more than 3 cases having admitted claim of more than 1,000 crores. इनफैक्ट मेरे को ये क्लास का पता भी नहीं था। जब ये इन्होंने डिस्कशन पेपर मांगा तो उसके अंदर इन्होंने ये लिखा था कि हम एक आईपी को, चाहे उसके पास ही इज एन आरपी, ही इज एन आईआरपी, he is an liquidator or he is an RP in the case of section 94-95 application or is an ER और bankruptcy, हम उसके अंदर सिर्फ उसको मैक्सिमम 10 ही केस देंगे। तो वी पीपल क्राइड अ लॉट, वी सेड भाई ये क्या कर रहे हो आप? तो डिस्कशन पेपर के अंदर हमने बहुत सारा इसको अपोज करा। उस समय हमारे को ये पता नहीं था कि ऑलरेडी ये क्लास है 22 जो एग्जिस्ट करती है कि जो ये कहती है कि आप 10 से ज्यादा केसेस नहीं ले सकते, दैट टू ओनली ऑफ आरपी. No more cases are over there because I don't think so anybody in India be having any ever be using the hit by this provision कि जिसके पास 3 केसेस 1000 करोड़ से ऊपर के हों, एक केस ही किसी को 1000 करोड़ के ऊपर का मिल जाए तो उसका नेशनल लेवल पे नाम हो जाता है। 1000 करोड़ से ऊपर का एडमिटेड क्लेम इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, तो 3 केसेस होना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। चलिए, इन एनी केस ये जो आईपी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी, दैट इज देयर बिकॉज आईपी is acting as an IP is not acting as an individual. They are acting as as a collective of all the IPs there. Yeah. Entity. Then एक और इसके अंदर प्रोविजन आया जी, स्क्रिप्ट का रेगुलेशन 34B के अंदर हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट आईपी एक्टिंग एज आईपी शैल हैव नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कोटेशन ऑफ फीस। ये तो मेरे को ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है कि ये तो देखो अब बेसिकली अब बैंक बिडिंग के अंदर जो हम आज की डेट में लिख देते थे कि फीस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रेगुलेशन 34B, उसके अंदर आईपी को जो वो परमिट करेंगे वर्किंग एज एन आईपी, तो कर ही रहे हैं परमिट, अब धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे। तो वो अगर लोअर कोर्ट फीस कर देगा, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर, उसका प्रोफाइल भी बेटर, और उसके बाद जो जो हमारा एक कंसेप्ट है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि वो सबका विश्वास सबका विकास, तो सबका विकास कहाँ से हो जाएगा? और स्पेशली जो हमारे इस तरह के वेबिनार्स के अंदर जो क्या कहते हैं हु आर नॉट फ्रॉम द हाई स्टेट ऑफ आईपी फैमिली, तो उनके लिए तो ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा।
और लेट्स सी टू इट। कोई बात नहीं, अब डिस्कशन पेपर आएगा जब आईबीबीआई से, जब भी हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो हम उनको कहेंगे एज ए सोल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि आईपी एक्टिंग एज आईपी के लिए आप केस का साइज स्पेसिफाई करिए, सो दैट शुड बी नो बैड कंपटीशन विद young IPs or smaller IPs. I shouldn't call them smaller because all IPs are equal. लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे वो आजकल वो सीए सर्कल के अंदर ना वो सेक्शन 43B सब क्लास H जो ऐड हुई है ना, उसका बहुत सारी चर्चा चल रही है एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो हमारे भी यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर एक है इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर भी। तो प्लीज टेक केयर फॉर दैट एमएसएमई सेक्टर आल्सो। चलिए, अब जो है सो है, ये मैंने जो बात कही थी वही था। और इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, कैन एन आईपी अपॉइंट अनदर आईपी? आई वुड रिक्वेस्ट माय को पैनलिस्ट टू गिव आंसर फॉर दैट। Yes, sir. The provision is there. Yes, one IP can appoint another IP to assist it in the rendering the services as an IP. अनुराधा जी ना कर रहे हैं। अनुराधा जी प्लीज बताइए आप नहीं ना नहीं क्यों कर सर, रहे हैं? आई अग्री, आई अग्री, Do you आई agree? अग्री। We also agree. I also agree. तो आईपी को अपॉइंट कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। That's right. Yeah, because they can provide services now. The option is open that they can help other IPs, so that IP नहीं, can be मैं an IP. So ओके, मैंने भी यस लिखा होता नीचे, ऐसा नहीं है। आई ऑल्सो गो हाँ, विद यू, आई नो कि आप यस कहोगे। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ सर, लेट्स एक मूव। मनीष जी का क्वेश्चन आ रहा है इसमें, प्लीज 10 प्लीज लो cases ना। is related only to CIRP or in total? I think you have किसमें? answered it also. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मनीष जी, एक आईपी के नाम पे काम लेना शुरू कर दीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ मूव टू सर्कुलर नंबर 65। There was some confusion whether IP can be part of monitoring committee or not. Because NCLT की judgments आई थी whereby they say कि it will act as a conflict of interest for the IP. Reason for that is कि they feel कि उसकी जो election plan approval कर रहा होगा उस समय then he will be get inclined towards SRA. तो चलिए, now it has been clarified that IP can be part of monitoring committee Yes, subject to correct. mentioning of it in the approved resolution plan. Right. Another relaxation in the billing is given, whereas now bill or invoice can be raised in the name of IPE or the professional or the firm in which such a professional is a partner for the purpose of class 25C of Code of Conduct specified in first schedule of IP regulation. जैसे हम अपनी पार्टी उसके अंदर करते हैं, क्या कहते हैं, सीए फॉर्म्स के अंदर या सीएमए फॉर्म्स के अंदर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म होती है, जो भी है वो एलएलपी या जो भी है उसके अंदर कर लेते हैं। तो अगर हम कोई एज एन इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं तो हम उसकी बिलिंग जो है अपनी फॉर्म के साथ कर सकते हैं। पर डेफिनेटली दिस कांट बी possible in the case of if our entity is a corporate, because in that case you can't do it. But in case of partnership, as a partner, if you're doing work, you can raise the bill in the name of partnership from therein. Okay, this is my sum up. I just sum up. उसके बाद अरवीना जी, आप प्लीज कम फॉरवर्ड जो आप कहना चाहते हैं। All the above changes shall further ease the process enrolled in IBC 2016 and bring more transparency in it. IP and IPS shall feel happy as their many demands have been accepted by the IBBI. It will also bring more confidence among all the stakeholders, especially investors, wherein they will realize that government is not only acting but also acting very fast. It will facilitate fast and transparent registration process in the days to come and give big boost to Indian economy, which is thriving to reach 5 trillion economy only in the next year. तो अब ये हमारा टेक्निकल सेशन, इस पे जो हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, मेरे को, अनुराधा जी को, अलॉन्ग विद अरविना को, तो वो दैट इज ऑन द वर्ड्स ऑफ कंक्लूजन। वो पूरा कंक्लूड नहीं हुआ। प्लीज ऐड टू इट। प्लीज ऐड, अरविना जी, यू वांट टू से समथिंग, वी लव टू लिसन टू यू, प्लीज। Manoj, so you've almost covered everything. Almost, Vinny, you've covered everything. So I will only touch upon few things. I was given a topic of PUFE transactions. So avoidance of PUFE transactions में ज़्यादा amendments तो आई नहीं है, except for one आजकल बहुत ही controversial चल रहा है, regulation 37A of the liquidation regulation. I just want to understand, is everyone aware of 37A? I'm sure पता होगा, बट कंट्रोवर्सी क्या चल रही है उस बारे में, इफ आप बस मेरे को एक रेज ऑफ हैंड्स दे दीजिए, whoever is aware of it, else I'll read it out to make it understand कि प्रोविजन क्या है, एप्लीकेशन कैसा है,
और कोर्ट में आजकल क्या कंट्रोवर्सी चल रही है एंड हाउ टू ओवरकम दैट कंट्रोवर्सी. Can everyone give me a raise of hand if they know section 37A, because नहीं I नहीं, don't. आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, ब्रीफली एक्सप्लेन ठीक कर है, दीजिए. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो एज पर रेगुलेशन 37A, कोई भी लिक्विडेटर असाइन या ट्रांसफर कर सकता है नॉट रेडिली रियलाइजेबल एसेट्स थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इन कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर कमिटी. नाउ व्हाट आर नॉन रेडिली रियलाइजेबल एसेट्स? ये कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हो गई जहां से रिकवरी होनी है, या अवॉइडेंस प्रोसीडिंग्स भी इसमें इंक्लूडेड है इसकी एक्सप्लेनेशन में, बाय डायरेक्टली सेइंग कि अवॉइडेंस एप्लीकेशन में से जो भी प्रोसीड आ रहा है आज की डेट में दैट कैन नॉट बी रियलाइज्ड, एंड दैट्स व्हाई उसका भी असाइनमेंट और ट्रांसफर हो सकता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दोज प्रोसीडिंग्स. सो फॉर एग्जांपल टुडे मैंने कंपनी को, कॉर्पोरेट डेटर को एज अ गोइंग कंसर्न लिक्विडेशन में सेल कर दिया. After the company has gone as a going concern, what will happen to the avoidance application? That was the concern, and that is why in 2020 this regulation was added, but not has been utilized very widely. Regulation बोलता है you can separately sell these avoidance application to any party, third party or a person who's taking the company as a going concern. एंड वो पार्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स इन प्रोसीडिंग्स को यूटिलाइज कर सकती है अपने फेवर में, अपने बेनिफिट के लिए, फॉर अ कंसिडरेशन. तो एज अ थर्ड पार्टी आई कैन परचेज द पेंडिंग अवॉइडेंस एप्लीकेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर. इसमें अब इशू क्या आ रहा है? एनसीएलटी दिल्ली बेंच 2 ने माया वर्सेस इंक्वेस्ट की जजमेंट है, उसमें इसका सेल मना कर दिया है, सेइंग कि until unless इन अवॉइडेंस एप्लीकेशंस का अमाउंट क्रिस्टलाइज होता है, एज इन until unless these avoidance applications are completely adjudicated, you cannot sell these application, which is making regulation 37A absolutely odious. उसका कोई relevance ही नहीं है वहां पे होने का. So that's the controversy which everyone while selling these NRRA accounts is now facing. माया वर्सेस इंक्वेस्ट एनक्लैट में भी गया था, बट एनक्लैट में द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय द लिक्विडेटर, बिकॉज अब आप एवरीवन वुड बी अवेयर दैट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज कम अप विद अ जजमेंट दैट आरपी एंड लिक्विडेटर आर न्यूट्रल पार्टीज. RP also cannot go ahead and file applications if someone else is aggrieved. इस केस में भी लिक्विडेटर जो है वो एनक्लैट गए ये बोल के कि 37A हमें प्रोवाइड करता है इन एसेट्स को बेचने का, बट एनसीएलटी इज सेइंग यू कैन नॉट सेल टिल द टाइम अमाउंट इज क्रिस्टलाइज्ड. एनक्लैट ओनली ऑन द बेसिस दैट दिस एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय अ लिक्विडेटर dismissed the appeal but kept the legal question open. So as per the reading of the NCLAT judgment, really the order has not been yet set aside, but the question is still open. It's just that liquidator cannot file an application for the assignment of these debts. Now the question comes ki how to resolve this issue. इस चीज को resolve कैसे करें? There are multiple judgments. दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट वीनस में, देन सुकाम का जजमेंट एनक्लैट में, विच बेसिकली सेज दैट पोस्ट रेजोल्यूशन प्लान आप अवॉइडेंस एप्लीकेशन का ट्रीटमेंट बता सकते हो, वेदर इट कैन गो टू SRA, विल स्टे विद द कॉर्पोरेट डेटर और हैज टू कम विद द स्टेक होल्डर्स. Similarly, for 37A, when regulation clearly provides कि third party इसका assignment ले सकती है, I personally think IBBI needs to come up with a clarification, or the NCLT judgments need to be set aside to say that, these assignment, these transfers are permissible. Any question, anything? I mean, I hope I'm making myself clear. इसमें अरुणाधा जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ. जी. आई एम नॉट कंफर्म बट आई जस्ट रिमेम्बर जो 37E और 36 के जो प्रोविजंस है, दीज आर एप्लीकेबल व्हेन यू आर फाइलिंग द डिसोल्यूशन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ एट द टाइम व्हेन यू सेल इट एज ए रनिंग कंसर्न, वेदर इट इज एप्लीकेबल और नॉट. I haven't been. It is applicable. I have a doubt. You can't remember everything. I filed my two such cases I'm handling right now. और इसके अंदर ये एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी आ गई है. जैसे इसमें
इफ यू सी, चलिए ये तो एनसीएलटी की जजमेंट है, एनसीएलटी की जजमेंट है. इफ वी सी, यू नो, दिस विदर्भा पेपर जजमेंट, रेनबो पेपर जजमेंट, इन वी लिटरेसी वर्ल्ड, दैट इज ट्रीटेड एज, you know, judgment by honorable court, which created a lot of fuss. और उसके बाद चलिए फर्स्ट ग्रेड हो गया, उस चीज को कवर करने के लिए, you know, our courts are still pursuing that particular judgment. तो ये इस तरह के इश्यूज जो हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको वो बताया कि आरपी को आप लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं करोगे, वो उसके अंदर एक डिफरेंट क्लास थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर आरपी के अंदर कोई ऐसी गलती पाई जाए जिस करके वो रेजोल्यूशन लाने में असमर्थ रहा या कुड नॉट ला पाया, था इन दैट केस, यू नो, adjudicating authority can see to it, but that clause can't be, you know, universally made applicable. So Correct. I have to say that thing only. Yeah, please, No, please conclude let yourself. me, Arina ji, like Manoj ji is saying, when जी you are selling it as a going concern, जी so then so it will go to the bidder नो, जिसको इट आपने डिपेंड्स. सेल किया. इट डिपेंड्स. गोइंग कंसर्न में आप कंपनी पूरा दे रहे हो, उसके अंदर Yes. आपने एनआरआरए का अकाउंट नहीं रखा है. नहीं एनआरआरए but इज वो सेपरेट, इट्स अ no no कंटिजेंसी फंड. that's right, but वो जब आप गोइंग कंसर्न दे रहे हो तो उसकी लाइबिलिटी तो सारा कुछ तो उसी में आई जाएगा. अग्री. नो, इस पे भी जजमेंट है. सो व्हेन यू थिंक, आई मीन एनक्लैट की एक जजमेंट आई है जसअमृत डिजाइनर्स करके, उसमें क्लियरली लिखा है कि गोइंग कंसर्न में भी लायबिलिटीज भी लिमिट हो सकती हैं एज पर द प्रोसेस डॉक्यूमेंट. हम्म. So if in the process document this liability is not included, it won't come or go to the person who, the auction purchaser who has taken it as a going concern. So going concern में भी आप assets divide करके बेच सकते हो, आप कंपनी इन टोटल बेच सकते हो. पॉसिबली कंपनी की एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग है जो एज अ गोइंग कंसर्न नहीं जा सकती है, या फिर खत्म हो गई है, बंद हो गई है. कंपनी 3-4 बिजनेस में इन्वॉल्व है. एक बिजनेस बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है, अच्छा चल रहा है, या चल सकता है टुमारो, बट एक एकदम बंद है और वो गोइंग कंसर्न में जा ही नहीं सकता. तो यू कैन डिवाइड दोस एंड सेल इंडिविजुअल अंडरटेकिंग्स आल्सो एज अ गोइंग कंसर्न. इस केस में सिमिलरली वो हुआ था. सो बेसिकली आपका डेफिनेशन, डिफाइनिंग पार्ट की एसेट क्या है वो प्रोसेस डॉक्यूमेंट बताएगा, और आपकी लाइबिलिटी कितनी है वो भी प्रोसेस डॉक्यूमेंट बताएगा. इसके हिसाब से आपकी रिलीफ एंड कंसेशन एप्लीकेशन जो है वो डिफाइन होती है. पहले रिलीफ एंड कंसेशन एप्लीकेशन पे भी बहुत कंट्रोवर्सी थी कि मैं एज अ गोइंग कंसर्न सेल कर रहा हूँ, जो ऑक्शन परचेजर आ रहा है वो क्या क्या मांग सकता है, कौन कौन सी लाइबिलिटीज से वो हाथ धो सकता है कि मेरे को ये लाइबिलिटी नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए. तो एनक्लैट ने क्लियरली बोला है जो प्रोसेस डॉक्यूमेंट में लिखा है इन टर्म्स ऑफ लाइबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एसेट, वो ही जाएगा ऑक्शन परचेजर को. रिमेनिंग हैज टू बी सेटल्ड फ्रॉम द सेल कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 53. इस केस में जो मैं आपको केस बता रही हूँ, इस केस में कंपनी हैज गॉन एज अ गोइंग कंसर्न. एनआरआरए वर सेपरेटली सोल्ड इन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेक होल्डर कमिटी. अरविंदा जी, एक मिनट मेरे Okay. को अलाउ करेंगे ऐड करना? मैं सुनील जी को थोड़ा जी सा सेटिस्फाई कर देता हूँ. जी सुनील जी, आई एग्री विद अरविंदा आल्सो. दीज आर फैक्ट दैट इज कि जो परफेक्ट ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट रिकवरी है, इसके ऊपर बहुत सारी जबरदस्त कंट्रोवर्सी है कि इसकी रिकवरी जो है, इट विल गो टू द सीओसी, इट शुड गो टू द एसआरए, इट शुड गो टू वेयर इट विल गो टू. तो ओनली इन दैट कंटेक्स्ट मोस्ट ऑफली गोइंग कंसर्न के अंदर भी परफेक्ट ट्रांजैक्शंस की जो वो क्या कहते हैं, जो आउटकम है, you know, as per process document shall be determined and honored. Right. No, no, that is तो there in the regulation 32A already talks about it कि आप you can identify that. चलिए अनुराधा जी, प्लीज, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, मूव Yeah. फॉरवर्ड प्लीज. हाँ. तो सॉरी अरविंदा जी, प्लीज. जी जी. सो बेसिकली इन रिस्पेक्ट टू, अब दो क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए हैं. इन रिस्पेक्ट टू एनआरआरए यू कैन ऑफ कोर्स सेल अंडर 37A. इट अलाउज यू टू सेल नॉन रेडिली अवेलेबल एसेट्स. सो कल को इफ द सिचुएशन कम्स दैट एन ऑक्शन परचेजर इज विलिंग टू टेक अ कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न but is not willing to take avoidance application, a liquidator may segregate those and put separate auction for NRRA account, which may fetch better price. Because आजकल the concept of liquidation, this litigation financing is also coming in. हाँ जी, So हाँ जी. उसको आप सेपरेट कर सकते हो ताकि आपकी कंपनी एक बेटर फुटिंग पे रहे, और एनआरआरए को आप सेपरेटली डील कर सकते हो, सेपरेट असाइनमेंट ऑन ट्रांसफर करके एज पर द ऑक्शन प्रोसेस. सर यही सबमिशन था. एनी अदर क्वेश्चन आई एम हैप्पी टू टेक. इसके अंदर मैं एक थोड़ी सी बात ऐड कर देना चाहूंगा
कि जब भी आप एनआरआई प्रैक्टिकली सेल करने के लिए जाएं तो उसके अंदर एक बात का ध्यान रखें कि बंचेस आर वेरी मच कंसर्न्ड विद दिस थिंग कि बिफोर सेलिंग, बिकॉज लॉट ऑफ इसके अंदर ना बदमाशी बहुत ज्यादा हो रही थी कि सम आईपीज वर डूइंग इट कि वो उसको एनआरआई बना के उसको 50,000, 5 lakhs, आने nothing. पौने भाव पे बेच देते थे। तो उस जी, चीज को कवर अप करने के लिए नाउ बेंचेस आर वेरी मच कंसर्न, दे लुक correct. इनटू इट कि आपने उससे पहले जो ऑक्शन का प्रोसेस है, जो रिलेवेंट रेगुलेशन थी, वो अपने Follow थॉरली करिए. एक्सरसाइज करा नहीं करा। यानी They कि do यू ask. इफ you should impress the bench that you did all this thing there, or you get exhausted with this whole auction process, and when you could not succeed in that auction process, you are going for the NRRE only. That is my Yes, only addition. correct. Yes, please carry on. Yes, That's yes. that's correct. Benches will definitely ask you for three things. First, आपने stakeholder committee से recommendation लिया, उनके सामने रखा और उनकी recommendation से ही auction हुआ है. Secondly, the auction has to be in absolute transparent manner. It has to be a public auction. And thirdly, आपका price. They may also go into the consideration which the auction purchaser is offering and on which price you have sold it to him. So it cannot be a case कि avoidance application में 400 करोड़ आ सकते हैं but आप उसको 50,000 में बेच रहे हो. That was the case in the Maya versus Inquest, that it was a very minimal amount which was being paid and therefore there was something hanky panky, तो कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था. So these three consideration has to be taken in mind before going for sale of NRRA. So I think we had less on time, so I will I will end with this only. Thank you very much. Thank you. You enlightened us, Arvina ji, a lot on this perfect transaction and what latest is happening in the court there. चलिए, मैं अब I'm moving for conclusion मेरा आ गया जी. अब हम आपका साथ थोड़ा सा when we are putting efforts in preparation of this PPT, we would like to share with you also in our IPA association we are हम जो current topics होते हैं उन्हीं के ऊपर हम सिर्फ deliberate करते हैं. तो this is the list we have prepared for you कि हमने पिछले साल 1.5 साल के अंदर इन टॉपिक्स के ऊपर डेलिब्रेट करा. वी ट्राई टू गेट स्पीकर्स एंड वी ऑलवेज गेट आल्सो कि जो प्रैक्टिकली काम को कर रहे हैं. दिस इज अ लिस्ट बिफोर यू. यू कैन हैव स्मॉल लुक ऑन इट बिकॉज टाइम इज स्केयर. वो शायद अभी 5 अकाउंट तो वैसे ही हो गए. तो लेट्स दिस इज फॉर देयर. इन सबको देखने के लिए अगर आप चाहो तो यू कैन गो टू द दिस इज वी हैव डन अपडेट वाइज देख सकते हैं कि वी आर क्वाइट फ्रीक्वेंटली टेकिंग ऑल दिस थिंग्स देयर. एंड वी रिक्वेस्ट कि जो अरवीना जी हैं या अनुराधा जी हैं, दे कैन आल्सो कंट्रीब्यूट बाय जॉइनिंग आवर एसोसिएशन or by joining our association. Then we can also make you speaker there also and make you to deliberate on all these things also. जब भी ये वेबिनार खत्म होगा तो प्रवीण जी से मेरा नंबर लेके you can be in touch with me. We have already through Praveen ji circle we have already taken 2 or 3 members like you as our either as a speaker or as a host like that in our programs there. और एक और बात है कि हम जो आईपा में भी प्रोग्राम करते हैं वो उसमें जीपा को इन्वॉल्व करते हैं. दैट इज ऑलवेज देयर. तो विद दिस नोट आई एम थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड. आई होप सब लोगों को अच्छा लगा होगा सुनना. इंटरेक्टिव सेक्शन था. और इसके बाद अब प्लीज मूव फॉरवर्ड. जो भी है तो मैं अपनी स्लाइड्स को क्लोज डाउन करता हूँ. Thank you, Manoj sir. Thank you very much. Thank you, Manoj ji. It was really a wonderful explanation of all the circulars and the amendments you have covered up, Anuradha ji and Ravina ji. It was really a good grasp on the PUFA transactions basically for which it is being, and you have specifically mentioned the judgment in which it was being argued that a valuation is required for the same. And it is not that for 400 crore you are selling it just for the 50,000 or 5 lakh things like. Thanks a lot. Thanks a lot to all the wonderful audiences, participants here who have who have made it really a participative discussion with raising the questions. And I hope all the panelists were generous enough to answer your queries. Thanks a lot again to all the panelists as well as to the participants also. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so Especially to much. Sunil ji, Thank you, who was thank you. quite participative. Sunil ji was quite participative. Absolutely. Thanks, Manoj ji. Thanks for. Thank you. Thank you, Manoj sir. Thank you, Arvina. Thank you, Thank Brit. you, Bye bye. everyone. Bye bye. Thank Bye you. bye. Bye. Bye-bye.
Thank you. Thank you, everyone. Yeah. Thank you.